तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। लेकिन आज जब भारत विकास की एक नई आभा के साथ वैश्विक मंच पर पूरी तरह छाता हुआ दिखाई दे रहा है, तब इन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है। तब ये लोग भारत को हर दिशा में बदनाम करके भारत की इस प्रगति में रोड़ा बनना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, कल के दृश्य को पूरी दुनिया ने देखा है, कैसे जब न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के एक सांसद श्री राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका यह वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है, और एक सांसद को इस प्रकार के वक्तव्य कभी शोभा नहीं दे सकते हैं। तब भी कांग्रेस के नेताओं के बयान, भाइयों बहनों, किस रूप में थे वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक तरफ जाति के नाम पर उस जातीय वैमनस्यता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाली कांग्रेस है, जिन्होंने सदैव समाज को विभाजित किया है, अलग अलग खेमों में बांटने का कार्य किया है। और दूसरी तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने भारत के अंदर देखा होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर किस रूप में गरीब कल्याण का कार्य बिना भेदभाव के सबको आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा देना, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ देना, करोड़ों लोगों को बिना भेदभाव के उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन देना, करोड़ों लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य करना, और करोड़ों लोगों के जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर विकास की उन सभी बुनियादी सुविधाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम। एक तरफ विगत 9 वर्षों के अंदर आपने सबका साथ और सबके विकास के इस नारे के साथ जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर इन सभी संकल्पों को उतरते हुए देखा है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस देश के अंदर एक गरीब के बेटे को जब देश के सर्वोच्च पद पर जाने का अवसर प्राप्त होता है, इनको फूटी आंखों भी यह सब दिखाई, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और कांग्रेस पार्टी का ये बयान और राहुल गांधी का ये बयान इस बात को एक बार फिर से प्रदर्शित करता है कि इन्हें न तो गरीब के बेटे को, वंचित और पिछड़े के बेटे को देश के सर्वोच्च पद पर जाना भी अच्छा नहीं लगा, और देश की प्रगति और देश के लोकतंत्र के फलते फूलते इस स्वरूप को भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है भाइयों बहनों, यह देश की जनता गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों
और समाज और देश की संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का बदला कांग्रेस से जरूर लेगी, उन लोगों से जरूर लेगी जो लोग भारत को अनजाने अनजाने में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें देश की जनता से अवश्य माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में देश कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। आज एक बार फिर से नव्य और भव्य काशी को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए, अनेक योजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी काशी में आए हैं। काशी के प्रति उनका आत्मिक लगाव है। काशी जैसे उनके रग रग में बसी है। काशी में उनकी उपस्थिति प्रत्येक जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति संवेदनशील और विकास के कार्य के प्रति अपने अपने संसदीय क्षेत्र और अपने अपनी विधानसभाओं में कैसे कार्य किया जाना चाहिए इसके प्रति भी सचेत करती है। आज एक बार फिर से आपकी उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायी होगी। मैं एक बार फिर से काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से आपका बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वाराणसी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अनुपम एवं सुविधाजनक रूप देने हेतु कैंट स्टेशन से गुदोलिया चौराहे तक यात्री रोपवे का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से किया जाएगा। आइए देखते हैं उसी पर एक फिल्म। विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील और दूरदर्शी विजन के कारण भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अगले 25 साल के अमृतकाल के विजन को साकार करने के लिए देश भर में पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार करने की अनूठी पहल की जा रही है। इसी विजन को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके तहत भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भारत के पहले अर्बन रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज किया जा रहा है। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले। इतिहास से पुरातन एक युवाओं का शहर जो स्वयं भगवान शिव की नगरी है। ऐसे दिव्य अनंत को प्राप्त वाराणसी शहर में जब देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, तब संकरे रास्तों और पतली गलियों से गुजरकर भगवान के मंदिर तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य बन जाता है। विश्व के इस प्राचीनतम शहर में आधुनिक आवागमन के लिए 3.85 किलोमीटर रोपवे वाराणसी कैंट से काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा और गिरिजा घर होते हुए गोदौलिया चौक तक प्रस्तावित है, जो भविष्य की विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस रोपवे में कुल 153 गोंडोला आवागमन के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें प्रत्येक गोंडोला में 10 यात्री और लगभग 1 लाख यात्रियों को दोनों दिशा में प्रतिदिन कम समय में सुरक्षित परिवहन का विकल्प प्रदान करेगा, जिससे वर्तमान में कैंट स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में 40 से 50 मिनट तक लगने वाले समय को मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के अनुकूल ये रोपवे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पूरा किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, बैगेज स्कैनर, ऑटोमेटिक गेट क्लोजर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, लॉकर रूम जैसी सुविधाओं के साथ रेस्टोरेंट, सुवेनियर शॉप्स, एटीएम और रेस्ट रूम इत्यादि सुविधाएं भी होंगी। सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक परिवहन को सुनिश्चित करने वाला रोपवे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
और समाज समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि तकनीकी और आस्था का अनूठा सामंजस्य एक महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर। बहुत बहुत बधाई काशी वासियों को। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की कड़ी में स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी कार्यक्रम काशी वासियों को नेत्र ज्योति प्रदान कर उनके चेहरों में मुस्कान बिखेर रहा है। आपके इस वृहत कार्यक्रम पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। And we are getting out those pictures as Prime Minister Narendra Modi to lay the foundation of Kashi ropeway. Extremely important as he is to inaugurate a slew of development projects as he is in Varanasi. Meanwhile, you just heard from UP Chief Minister Yogi Adityanath, who in a full frontal attack at the opposition went on to speak about appeasement politics and also targeted the Congress of how they questioned the judiciary. Meanwhile, Prime Minister Modi marking the adoption of a new mode of public transport, while other gifts as it is a boost to education sector, health services, sports facilities, Make in India and Ganga cleaning initiatives. That is the aim of both the UP government and working in tandem with the centre. We're slipping into a short break, but before that, we also get to the top stories that we are tracking this afternoon. 14 political parties, including the Congress, Aam Aadmi Party and Shiv Sena, who moved the top court against alleged arbitrary use of central investigating agencies like the Enforcement Directorate and CBI in arresting opposition leaders, is why they have now moved to the top court. Hundreds of Congress workers marched towards Raj Bhavan in Bengaluru demanding SC/ST quota hike to be brought under Schedule 9. The protest was led by DK Shivakumar and Siddaramaiah. Rahul Gandhi's conviction row now reached Jammu and Kashmir, where the Pradesh Congress held a protest at Shahidi Chowk, Jammu, in favour of Rahul Gandhi. JKPCC Working President Raman Bhalla and Waqar Rasool were also leading the protest. BJP ups the ante against Rahul Gandhi on conviction. BJP to run a campaign from 6th April to 14th April targeting 1 lakh houses and 1 crore people, speaking all about the intentions of Rahul Gandhi against OBC Samaj. Finance Bill 2023 was tabled by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha amid sloganeering by opposition MPs demanding a JPC inquiry into the Adani Group issue. The bill was later passed in Lok Sabha. Delhi Police registered a case in connection with the protest held outside the Indian High Commission in London on March 19. The case was registered by the special cell under IPC, UAPA and PDPP, as it involves unlawful activities carried out by certain people holding Indian nationality abroad. Uttarakhand Police announces NSA against a person harbouring Amritpal. Police clearly mentioned that if anyone provides shelter to Amritpal or any of his aides, action will be taken against that person. Meanwhile, the police also announced a reward for providing information about Amritpal. PM Modi launching various initiatives including the TB Mukt Panchayat initiative, official pan-India rollout of a shorter TB preventive treatment, family-centric care model for TB and release of India's annual TB report 2023 at One World TB Summit in Varanasi. Tamil Nadu Tourism Minister Ramachandran inaugurated the works of state's first floating restaurant, which is to be located at Muttukadu Boat House
On the budget of 5 crores, Tamil Nadu Tourism Department will introduce floating restaurant ship to be designed with 125 feet length and 25 feet wide. Stepping into a short commercial break, on the other side, amidst infighting, Amit Shah was at Yediyurappa's residence to strategize Karnataka polls. And a discussion of Kashmir transformation that irked Pak nationals who were kicked out of the event for creating ruckus. 11 associates of Amritpal are to be produced here at Baba Bakara Court Complex here in the Amritsar district. Several of them have been arrested under the Arms Act, while 4 others are facing the different charges. They were sent to 4 and 3 days custody. The anti-riot police along with the rapid action force have been deployed here at the court complex to ensure that there is no law and order situation emerging out of it. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए? सर, आई वुड से एवरेस्ट इज ऑलवेज द डिफिकल्ट वन. हालांकि लॉट ऑफ पीपल सेज एवरेस्ट में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, बट लेट मी टेल यू सर, एवरेस्ट रिमेन्स एवरेस्ट. Everest is the highest mountain in the world and it will remain so. And I have find Everest to be the most difficult. Most difficult. Most difficult. Ultimately crevasses उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं. Ultimately वो लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है. डर लगा कभी? सर, आई थिंक डरना भी जरूरी है, बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come 5-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's a second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे ये बताइए. एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? यस. अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए, कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? Climbed sir Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent sir. Then I went to Carsten's Pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट में चढ़ी चुका था. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Massif, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's the 7th continent. So the highest mountain is Vinson Massif. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come 5-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's a second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. We cut across to more breaking news coming in. It is a shocking case of VVIP arrogance. Senior Congress leader Siddaramaiah was seen snapping a Congress worker from Harihara Assembly constituency. The workers were chanting anti-Siddaramaiah slogans when a miffed Siddaramaiah asked them to be silent. They did not listen to him. Then Siddaramaiah lost his cool and slapped a supporter of MLA Ramappa. The entire incident was caught on camera. There you see what exactly happened, and a lot of criticism coming Siddaramaiah's way. I also want to cut across to my colleague Prajwal, who's joining us live. Prajwal, what got Siddaramaiah
so irritated that he went on to slap this MLA. And how are the local workers, the party workers, reacting to this? Slap a party worker, but not the MLA in this case. And this particular party worker was somebody who was considered to be very close to the Harihara MLA from Harihara Assembly constituency, Ramappa. And initially now there has been a fight among ticket aspirants in the Congress stating that a ticket will have to be given to their respective candidates as well. And there has been many factions within the Congress too, where we have seen a lot of infighting within the Congress party as well. And today there were around workers from around 6 to 7 constituency, and there were mainly 3 factions when it came to the Harihara Assembly constituency itself, outside the residence of Siddaramaiah near Kumarakripa. And initially when he was heading off for the protest, a few of the angry workers stated that they had been waiting for him since morning to put in a word, but Siddaramaiah would not listen to them. At which point of time we can see that one of the supporters of this MLA, Ramappa, has gone on to shout, stating that why are the Congress leaders not giving them time, especially during the elections as well, and what has Ramappa not done for the party, because he's always been a very prominent leader, especially in the Davangere region as well, and why is he not being given a party? And there were slogans which was called out against Siddaramaiah, and also slogans which was called in for Ramappa, which irked Siddaramaiah. Initially he's heard shouting at the workers to give him space, and when they have not listened to him, he slapped him right in front of the other party workers too. And this has left many of them shocked, and many of the Congress workers themselves in the party are now very angry with Mr. Siddaramaiah, stating that how can he go on and display such arrogance when the party workers are asking as well, and they have told that they would be teaching him a beef-eating lesson as well. So absolutely something which is shocking as well. And when we did go on and try to ask Siddaramaiah, he dismissed this entire issue and stated that it just happened in the heat of the moment. But, Prajwal, this will certainly send a very negative message to the grassroots level workers. And ahead of the polls in Karnataka, this is a risk that the leadership in Congress certainly cannot afford. S. Prakash from the BJP is also joining us on the broadcast. S. Prakash, such arrogance by a top leader in Karnataka of the Congress party, Siddaramaiah, is certainly very, very upsetting for the grassroots level workers, and not just that, even to the vote bank by and large sends across a negative message. No, it's very unfortunate. Mr. Siddaramaiah is repeatedly indulging in slapping his own karyakartas who stand by him, who are supporting him, who raise slogans in favor of him. The Congress workers have to take his frustration, anger over them. Mr. Siddaramaiah, who is not able to find a seat in Karnataka for the ensuing election, I feel he is frustrated about it, and he is displaying his frustration over his own workers who are with him. This is not the first time. He is a repeated and serial offender. And largely there is a sense of disappointment that those working at the grassroots level are feeling, that even at this point the leadership is not giving them enough time or indulging them right when the state is to see polls very soon. And this is once again quite the sentiment across the party, even nationally, is a message that is going in the poll-bound state in the Congress party. No, any worker is slapped publicly by his own leaders. It will demoralize other workers who will be working for any party. And when Siddaramaiah is committing that offence, is very serious, because he's the senior most leader in the party. And I feel Mr. D.K. Sharma should give a dressing down to Mr. Siddaramaiah over his behavior and ask him to mend it. All right, S. Prakash, many thanks for speaking to Republic this afternoon. Prajwal, I want to come back to you because such controversies against Siddaramaiah are coming out too frequently, where he has been caught on camera, be it the display of VVIP arrogance, of losing his temper, or even having caught off guard when he's having these conversations with his colleagues. But obviously,
being the public personality that he is and a top name in the Congress party in the state of Karnataka, all this could well form a very negative image of him and damage his reputation in that sense, and not something that they would want ahead of the polls. Absolutely. It is demoralizing for any party worker to be hit by the most top leader of his or her party as well. And this is not the first time too. Initially, when the leaders as well as workers from the Kolar Assembly constituency too came in, Siddaramaiah did not give in to their demands as well. And he remains brazen about it and unabashed about this entire issue as well. So this is something which needs to be, which needs to be addressed immediately by the Congress top management as well. And now the BJP is latching on to it and stating that he is a serial offender, he's a serial slapper, he's been caught on camera many times going on to assault party workers, misbehaving with them and speaking to them in tones and language which is unfit for a politician as well. This is something which the BJP is lashing out against Siddaramaiah now, and this comes at a time when Siddaramaiah himself does not have an assembly constituency to contest from, because he's in a dilemma, he's in a confusion. The Congress party in itself is in a confusion, and they are backing, they are falling back on the party. Oh yes, a lot of confusion over who will fight from Kolar and what Siddaramaiah will choose, but Republic has also pulled out that image from 2019, a repeat of the exact same action where he was seen slapping a worker on the ground, and like we are saying, Ujjwal, not something that will be perceived correctly, but we leave it at that. Thank you for joining us with all these details. चंद्र घंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्र घंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया।
साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं, वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहां के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बनारस आने वाले ये लोग अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, 8-9 वर्षों के विकास कार्यों के बाद जिस तेजी से बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े, शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना जाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। अब जो ये रोपवे यहां बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। इससे कैंट स्टेशन से गदौलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, वाराणसी में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी किसी एक इलाके में आते हैं, काम खत्म करके रेलवे या बस स्टैंड चले जाते हैं।
उनका मन होता है बनारस घूमने का, लेकिन सोचते हैं इतना जाम है, कौन जाएगा। वो बचा हुआ समय स्टेशन पर ही बिताना पसंद करते हैं। इस रोपवे से ऐसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा। भाइयों और बहनों, ये रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ आवाजाही का प्रोजेक्ट भर नहीं है। कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर ही रोपवे का स्टेशन बनेगा ताकि आप लोग इसका सीधा लाभ ले सके। ऑटोमेटिक सीढ़ियां, लिफ्ट, व्हीलचेयर रैंप, रेस्ट रूम और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी वहीं उपलब्ध हो जाएगी। रोपवे स्टेशनों में खाने पीने की सुविधा, खरीदारी की सुविधा भी होगी। ये काशी में बिजनेस और रोजगार के एक और सेंटर के रूप में विकसित होंगे। साथियों, आज बनारस की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा काम हुआ है। बाबतपुर हवाई अड्डे में आज नए एटीसी टावर का लोकार्पण हुआ है। अभी तक यहां देश दुनिया से आने वाले 50 से अधिक विमानों को हैंडल किया जाता है। नया एटीसी टावर बनने से ये क्षमता बढ़ जाएगी। इससे भविष्य में एयरपोर्ट का विस्तार करना आसान होगा। भाइयों और बहनों, काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहा है उनसे भी सुविधाएं बढ़ेगी और आने जाने के साधन बेहतर हो जाएंगे। काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा किनारे के शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 8-9 वर्षों में आप गंगा के बदले हुए घाटों के साक्षी बने हैं। अब गंगा के दोनों तरफ पर्यावरण से जुड़ा बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के हिस्से में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए इस वर्ष के बजट में भी ऐलान किए गए हैं। चाहे खाद हो या फिर प्राकृतिक खेती से जुड़ी दूसरी मदद, इसके लिए नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि बनारस के साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि और कृषि निर्यात का एक बड़ा सेंटर बन रहा है। आज वाराणसी में फल सब्जियों की प्रोसेसिंग से लेकर भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाएं तैयार हुई है। आज बनारस का लंगड़ा आम, गाजीपुर की भिंडी और हरी मिर्च, जौनपुर की मूली और खरबूजे विदेश के बाजारों तक पहुंचने लगे हैं। इन छोटे शहरों में उगाई गई फल सब्जियां लंदन और दुबई के बाजारों तक पहुंच रही है। और हम सब जानते हैं, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उतना ही अधिक पैसा किसान तक पहुंचता है। अब करखियाओं फूड पार्क में जो इंटीग्रेटेड पैक हाउस बना है,
उससे किसानों, बागवानों को बहुत मदद मिलने जा रही है। आज यहां पुलिस फोर्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे पुलिस बल का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। साथियों, विकास का जो रास्ता हमने चुना है उसमें सुविधा भी है और संवेदना भी है। इस क्षेत्र में एक चुनौती पीने के पानी की रही है। आज यहां पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हुआ है। गरीब की परेशानी कम करने के लिए ही हमारी सरकार हर घर नल से जल अभियान चला रही है। बीते 3 साल में देश भर के 8 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हुआ है। यहां काशी और आसपास के गांव में भी हजारों लोगों को इसका लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना का भी बहुत लाभ बनारस के लोगों को हुआ है। सेवापुरी में नया बॉटलिंग प्लांट इस योजना के लाभार्थियों की भी मदद करेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुगम होगी। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले मेरी सरकार की अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत हुई है। किसी को आंखों की रोशनी मिली तो किसी को सरकारी मदद से अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद मिली। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, और अभी मैं एक सज्जन से मिला तो वो कह रहे थे, साहब स्वस्थ दृष्टि दूरदृष्टि। करीब 1000 लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज हुआ है। मुझे संतोष है कि आज बनारस के हजारों लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले के वो दिन जब बैंकों में खाता खोलने में भी पसीने छूट जाते थे। बैंकों से ऋण लेना, इसके बारे में तो सामान्य परिवार सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब से गरीब के परिवार के पास भी जनधन बैंक खाता है। उसके हक का पैसा, सरकारी मदद आज सीधे उसके बैंक खाते में आता है। आज छोटा किसान हो, छोटा व्यवसायी हो, हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह हो, सबको मुद्रा जैसी योजनाओं के तहत आसानी से ऋण मिलते हैं। हमने पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है। रेहड़ी पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को भी पहली बार पीएम स्वनिधि योजना से बैंकों से ऋण मिलना शुरू हुआ है। इस वर्ष के बजट में विश्वकर्मा साथियों की मदद के लिए भी पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। प्रयास यही है
कि अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो, कोई भी पीछे ना छूटे। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मेरी खेलो बनारस प्रतियोगिता के विजेताओं से भी बात हुई। इसमें 1 लाख से अधिक युवाओं ने अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। सिर्फ ये अपने बनारस संसदीय क्षेत्र में। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। पिछले वर्ष सीगरा स्टेडियम के पुनर्विकास का फेज 1 शुरू हुआ। आज फेज 2 और फेज 3 का भी शिलान्यास किया गया है। इससे यहां अब अलग अलग खेलों की, हॉस्टल की आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। अब तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। जब स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो एक और आकर्षण काशी में भी जुड़ जाएगा। भाइयों और बहनों, आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल यानी 25 मार्च को योगी जी की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 2-3 दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। सुरक्षा और सुविधा जहां बढ़ती है, वहां समृद्धि आना तय है। यही आज उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। आज जो ये नए प्रोजेक्ट्स यहां जमीन पर उतरे हैं, ये भी समृद्धि के रास्तों को सशक्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को विकास के इन अनेक कामों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अभी आप थोड़ी देर अपने स्थान पर बैठे रहें। विकास की एक और नई अविरल धारा प्रवाहित हो गई। काशी वासियों को आज 1800 करोड़ की All right, viewers, so we just saw the Prime Minister speak there in Varanasi, and many important points. A short while back, the Prime Minister also inaugurated and launched 28 development projects worth over 1,780 crores in Varanasi. A lot of emphasis on the development work which is happening in Varanasi, and also saying that the speed of which Varanasi is developing, that is something the nation should watch. Also talking about the industry there, the wooden toys, the saris, and many more. Many more things are getting famous among the tourists visiting the city. That was also something which he highlighted, the Prime Minister there. In fact, let's move ahead, viewers. We keep continuing to get you the latest updates which are coming in at this point of time.
All right, viewers. So right now we can see the Prime Minister there. You can see how many people have come out today to watch him and hear his address as he's waving to the crowds there in Varanasi. Okay, we're getting some breaking news coming in right now. Let's go ahead. We're getting some big breaking coming in. This is massive. Big breaking coming in. Rahul Gandhi has been disqualified. Viewers, getting these back-to-back updates coming in. Rahul Gandhi stands disqualified, and this is a very, very big news because there was a big demand being raised for his disqualification yesterday, and we are breaking this first on Republic, where we are learning that Rahul Gandhi has been disqualified. He has been disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction, that is 23rd March 2023, in terms of the provisions of Article 102. 1E of the Constitution of India, with Section 8 of the Representation of the People Act 1951. This is a very big development coming in right now, viewers. This is a massive setback coming in for Rahul Gandhi as well. Big news coming in right now. Rahul Gandhi has been disqualified, and we're still waiting for more updates. But Aishwarya Kapoor is joining us. Aishwarya, very big development. It's a big breaking first in Republic. Rahul Gandhi has been disqualified. Well, absolutely. That's the breaking news coming in, and that's exactly what the Congress party was saying, that it can happen, and it has happened. Rahul Gandhi, Rahul Gandhi has been disqualified as a member of parliament. Rahul Gandhi is no more a member of parliament after he was sentenced to 2 years in a criminal defamation case. Rahul Gandhi is no more a member of parliament. Rahul, it's a big jolt to Rahul Gandhi and to the Congress party. Rahul Gandhi's membership to Lok Sabha has been termed as beg your pardon, he has been disqualified by the Lok Sabha Speaker's office. Rahul Gandhi, it's a big jolt to Rahul Gandhi. His membership of the lower house of Lok Sabha has been disqualified. Yeah. Right, Aishwarya, this is a very big news coming in, and this is under the Representation of the People Act, RPA, 1951. And this law clearly says and provides disqualification for conviction in criminal cases. I'll come back to you, Aishwarya. I'm just going across to Tom Vadakar of the BJP is joining us. Big news coming in. Tom Vadakar, your first reaction. There was a huge demand yesterday itself, which was raised that he should be disqualified because his conviction is something which comes under the Representation of the People's Act, where disqualification will happen of a MP for conviction in criminal cases. Well, this was bound to happen. It was something that is within the purview of the law, and it has happened. This gentleman has crossed all limits in his speeches, or whatever interaction or interfaces that he has both in India and abroad. Now, it is time the law will catch up with him. I should also, at this point, point out, it is the same ordinance that he tore during the Manmohan Singh period, which would have given him some reprieve. But the grave that you dig for others is incidentally, prepared for your own burial. This is precisely what happened when he tore those ordinances at that period of time. His intention was to fix Lalu Prasad ji, and now he's facing the same music. And if that perhaps that ordinance existed, he might have got some reprieve. But the reality is that this man has been defaming the nation, defaming the parliamentary structure. He has been defaming democratic temples of democracy. So I think it is a natural, it's poetic justice catching up with him. Right. And Tom Vadakar, thank you for joining us here on Republic TV, BJP spokesperson. Massive setback for Rahul Gandhi, and viewers, the law has caught up. The law has caught up to Rahul Gandhi. It's a disqualification after the conviction of Rahul, because no matter whoever sits
in the parliament, they will be disqualified as per the constitution. Samiksha is joining us live. Samiksha joining us live from the Mumbai newsroom. Samiksha, I'm coming across to you. You know, this is a very big story and a big broken first in Republic TV. Massive. Rahul Gandhi is no longer an MP in the Lok Sabha. Well, that's right, Shivangi, and this is clearly on the expected lines. Remember, yesterday, Mahesh Jethmalani also, while speaking to Republic, said exactly the same thing, that Rahul Gandhi, in all likelihood, would be disqualified. Reading this notification also, which says, consequent upon his conviction by the Court of Chief Judicial Magistrate, Surat, Rahul Gandhi, member of Lok Sabha representing the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction, which was on Thursday in this case, in terms of the provisions of Article 102 of the Indian Constitution with Section 8 of the Representation of the People Act 1951. Copy has already been forwarded to Rahul Gandhi, who is now the ex-MP, Shivangi, and copy has also been forwarded to President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, along with the Rajya Sabha Secretariat, Election Commission of India, all ministries, departments of Government of India. So everyone have been notified. The copies have also been sent to Rahul Gandhi also, who's here been addressed as ex-MP. So it's with immediate effect that Rahul Gandhi is no more the Lok Sabha MP who represented earlier the Wayanad constituency of Kerala, Shivangi. All right, Samiksha is getting us the latest details right now, and we're seeing that the disqualification. All right, so that's a big setback of sort coming in for Rahul Gandhi, who's no longer the Lok Sabha MP. This is the notification, the full notice that we've accessed, which again I'm going to read out for our viewers. Consequent upon his conviction by the Court of Chief Judicial Magistrate, Rahul Gandhi, member of Lok Sabha representing the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of conviction, which was Thursday in this case, in terms of the provisions of the Article 102 of the Constitution of India, read with Section 8 of the Representation of the People Act 1951. Now remember, Shivangi, he has 30 days time has been given by the Surat court to seek further recourse. He could be approaching a higher court in all likelihood. Remains to be seen whether in this case it's going to be the appellate court or the Supreme Court. But yes, he has that 30 days of time. This of course after the court found him guilty of his earlier remarks he made way back in 2019, just ahead of the Lok Sabha polls in the Kolar constituency of Karnataka. Now this copy has already been sent to Rahul Gandhi, who's been addressed as ex-MP here. The copy has also been forwarded to the President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, along with the Election Commission of India, all ministries, departments of Government of India, the Chief Electoral Officer of Thiruvananthapuram. This, of course, as Rahul Gandhi represents the Wayanad constituency of Kerala, who is no longer an MP, of course, and also other officers in this case. In fact, all officers and branches of Lok Sabha Secretariat have also been sent this copy, which mentions that Rahul Gandhi no longer is the Lok Sabha MP as he was earlier. Of course, we await a remark, any reaction to come in from the Congress. A setback definitely for Rahul Gandhi as we speak, Shivangi. Remains to be seen the further course of action that is taken by the Grand Old Party in this case. Right. Samiksha, this is very, very big development coming in. And Samiksha, like you were saying, we still have to wait for the Congress to really react to this, because yesterday, even after that conviction had come in, the Wayanad Congress had jumped into denial mode once again. They were standing up for Rahul Gandhi, even though the court had clearly convicted Rahul Gandhi, sentenced him to 2 years in jail by a Surat court in a 2019 defamation case. The conviction had come over his remarks about the Modi surname. So yesterday we saw the Wayanad Congress jump in defense of him. Today, once again, the opposition was bringing up the Adani Hindenburg issue once again, creating ruckus. A big ruckus was created today in the parliament. But
There was no response coming in from them apart from defending Rahul Gandhi yesterday. Now we have to wait and watch, of course, to see what the Congress has to say about this big disqualification after the conviction of Rahul. And the law is the same for everybody. This has happened under the Constitution. There are three provisions in the Constitution for a lawmaker to be disqualified. The first being holding an office of profit, being of unsound mind or insolvent or not having valid citizenship. Second one is disqualification in the 10th schedule of the Constitution. And third is what has been the provision for Rahul Gandhi for his disqualification, which is the RPA, the People Act 1951, the Representation of the People Act. Aishwarya Kapoor is joining us back, our executive editor Politics. Aishwarya, now this is a very big development, and it also says that the law is the same. Everyone is equal in the eyes of the law, Aishwarya. Well, absolutely, but it's high time for the Congress party, Shivangi, to now understand and also realize that it's high time for them to look over and beyond the Gandhi family, over and beyond the tag name Gandhi. They need to really look and promote those leaders who can bring back the Congress into fight, who can bring back the Congress party in fight against the BJP, who can get back their lost bastions. They have given their regional players like the Aam Aadmi Party, like the TMC, full field to play. So they need to get back their regional strength back. They need to rally behind the leaders who can get Congress back to its old glory. A Congress is no more a serious player nationally. The regional players have stopped taking Congress party even as a strong contender for opposition. So the reality is, rather than rallying around the tag name Gandhi, they need to rally behind a leader who can really lead the Congress party. And now with Rahul Gandhi being an ex-MP, former MP, it's All right, Aishwarya Kapoor, executive editor, Politics, is helping us understand also the implication of this. Like Aishwarya Kapoor is saying that still waiting for a reaction to come in from the Vadra Congress, from the Congress, because this is a very big story. While they were hyping up the Adani Hindenburg issue, even completely ignoring what was happening with Rahul Gandhi, completely ignoring the conviction, completely ignoring that he has been sentenced to 2 years in jail for a defamation case, and jumping in defense of him again and again. But then again, like we have been reporting here, Republic TV, the law is the same for everyone. Everyone is equal in the eyes of the law, and the Constitution applies to everybody. Now, under the Constitution, there are three provisions in which lawmaker can get disqualified, and this is the third provision, which is a Representation of the People's Act. That is the provision where Rahul Gandhi has been disqualified as an MP, so he's no longer a Lok Sabha MP. Now Rahul Gandhi is an ex-MP. I repeat, Rahul Gandhi is an ex-MP, viewers. This is the big news coming in right now on Republic TV, viewers, and this is in connection, remember, to that case, the defamation case. Rahul Gandhi was held guilty and sentenced to 2 years in jail by Surat court in a 2019 defamation case. The conviction came over his remarks about the Modi surname, and the conviction had triggered the process of his disqualification as a lawmaker. Many calls were made yesterday itself that Rahul Gandhi should be disqualified as per law, and after that ruling, we see that the disqualification has happened just today. And Aishwarya Kapoor is joining us back right now. Aishwarya, like you were saying and telling our viewers, now what can we expect next? Still, complete silence from the Congress. Still. No, absolutely, Shivangi, and we need to understand that the Congress party right now, as we speak, Priyanka Gandhi, sister of Rahul Gandhi, is meeting Rahul, but the only Gandhi as a member of parliament is Sonia Gandhi now. So it is high time, once again I repeat, the directionlessness which is prevailing in the Congress party should end. The leaderlessness which is prevailing in the Congress party should end. Mallikarjun Kharge should act as a real national president, or no more just a rubber stamp. Because till now, Mallikarjun Kharge, no leader Kharge even seriously. And that's the reality, Shivangi. No one.
Everyone only used to go to Rahul Gandhi, but after Rahul Gandhi now being disqualified, it's high time that the true leadership in the Congress party comes out. That the leaders who can really lead from front, the leaders who can get the cadre together, the leaders who can get Congress back to its past glory can come back. There is no dearth of caliber of leaders in Congress party. But the only irony is that the coterie has made it such that the Congress will only survive till the rally behind Gandhi. And now, after Rahul Gandhi being disqualified as a member of parliament and him being an ex-MP, and it's going to be very interesting, viewers, that whether there is going to be an election. Is the election commission going to call for an election in Wayanad, Kerala or not? If yes, then it's going to be very, very interesting. But as far as the future of Congress party is concerned, there is a parallel meeting which our colleague Anuj is just flashing, that Priyanka Gandhi is meeting Rahul Gandhi. We will get those live visuals in front very, very soon. But at this point of time, what is happening is that this is a time of churn. Let's accept it. This is the real time of churn in the Congress party. The Congress party really needs to, the leaders, the true leaders, the leaders who represent the people, the masses in the Congress party need to come out in the open and say it's been high time after Rahul Gandhi's disqualification. Now it's time for the true leaders to come out in the Congress party and lead from the front. Because if they don't do now and they still rally behind the Gandhi, then there is no saving the Congress party. Shivangi. Right, and a key meeting has been called today. Emergency meeting of the steering committee has been called. It looks like that the Congress is calling a key meeting. Any details coming on that, Ashurya? What can we expect next? We know that Mallikarjun Kharge will be presiding over that meeting. वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? आज 5 अरे सुनो तो भाई एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह से लेकिन मेंबरशिप गई है इस तात्कालिक कार्रवाई पर क्या कहेंगे सर? अरे ये हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे और कहीं भी
अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे All right, so we heard Mallikarjun Kharge once again jumping into the defense of Rahul Gandhi, even though the law clearly says that anyone under the RPA, if you fall under the RPA, there's a criminal conviction or a case, this leads to disqualification. Shazia Ilmi joining us on the phone line. A very good afternoon to you too. Right now, this is a very big story. Congress once again calling it a political vendetta, when on the other hand, everyone knows it's a constitution of India where disqualification will happen no matter what if it falls under the RPA Act. Hello. Shazia, can you hear me? Yes, I think this is a huge setback for the Congress party, and I think it's pointless for them to cry political vendetta when we all know that the due judicial process has been followed. So I think Rahul Gandhi will be, as you know, that for the next few years we won't be allowed to contest. That's one. And according to the law, Rahul Gandhi would lose his Lok Sabha seat. And disqualification also means that he won't be able to contest elections for 8 years. 2 years running with the sentence and 6 years under the Representation of the People Act 1951. So the court had made it very clear that sending a lesser punishment will send a wrong message to the public. And the purpose of defamation would not have been achieved. These are the exact words. So I think it's very clear that Rahul Gandhi would have to, mend his ways and recognize the serious mistake he made. And he was not apologetic about it. Let's see where it goes next. But I think it's been made very clear, and it's a huge setback for not just Rahul Gandhi but for his entire party. But Shazia, we just heard Mallikarjun Kharge, where once again he is saying it's political vendetta. Congress has been saying this again and again, multiple times. But this time it is a Constitution of India. It's a Constitution of India, Shazia. I just want to go across to Amit Malviya. Amit Malviya joining on the phone line from the BJP. Amit Malviya, this is a very big development coming in where Rahul Gandhi can no longer call himself a Lok Sabha MP. He can no longer call himself a Lok Sabha MP, and still we are seeing the Congress is deciding the next move it will make at a strategy meet. And they're still defending Rahul Gandhi. Well, they can defend Rahul Gandhi till the cows come home, but the fact is that this is as per law. This is the provision in Constitution read in conjunction with the People's Representation Act that any legislator, once convicted for 2 years or more, stands to be automatically disqualified whether he's a member of parliament or a member of legislative assemblies. Now, there have been several precedents, and Rahul Gandhi can't be above law. The truth is that he has been convicted by a court, and therefore, in the normal course, he stands disqualified. And the Congress lawyers, including senior lawyers like Abhishek Manu Singhvi, know about this. He conceded this in a media interaction yesterday. So where is the problem? Why is the Congress not willing to accept that the Gandhis are not above law? Absolutely, Amit Malviya, and that is what is very, very important to note, that everyone is equal before the law. Amit Malviya, also I would like to ask you this: how do you see things? How do you see things in the future, right, in the next few days? Because now we are seeing that it's very, very clear that if Congress has been defending Rahul Gandhi for so long, they might try another route. Do you think this might become a legal fight? Tripya, line.
All right, Amit Malviya of the BJP was joining us here. So, viewers, big details coming in right now that the Congress once again goes in a huddle. It's calling for a meet. Mallikarjun Kharge saying that it's political vendetta, that Rahul Gandhi has been helping the people, and because of the great work that Rahul Gandhi has been doing, the centre and the BJP is targeting him once more. A targeting jibe coming in from the Congress, even though he has been disqualified under the Constitution of India. Now we have to wait and watch exactly what will happen next, because there are some legal routes that Rahul Gandhi can take next. Of course, our colleagues will tell us more about that. और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पे ये सजा होती है. राहुल गांधी जी किया है. राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं. कभी सूरज की अदालत से उन्हें मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है. उनके सदस्यता को लेकर राहुल गांधी जी जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है. राहुल जी, एनी कमेंट सर? राहुल जी. All right, viewers, so this is the big story. Rahul Gandhi has been disqualified from the Lok Sabha, and this is the news, the breaking update that we broke first on Republic TV today. Shortly, the Congress will go into a huddle meet around 5 p.m. Mallikarjun Kharge also once again saying that political vendetta, the same narrative from the Congress coming in. Let's go straight to Rakshita from our Delhi studios. Rakshita, I'm coming across to you. This is a very big story which has been broken first on Republic TV, and this also has many political and legal implications which we can expect in the next few days. Rakshita. Absolutely. Massive setback days for the Congress party and for Rahul Gandhi, of course. On your screens, viewers, you can see how it was Rahul Gandhi himself in 2013 who was actually backing this sort of disqualification. And you just see the turn of fate today. He is disqualified as a lawmaker because of this very ordinance that he tore. He was against, and today he stands disqualified from the Lok Sabha. So massive political, we can see drama that is of course set to now pan out. Congress is in a huddle. Already the Congress has been struggling to revive its fate. There was a Bharat Jodo Yatra we saw a few days back, and it was seen as a kind of a new revival for Rahul Gandhi, becoming the face yet again for the Congress party. After that, we saw how what happened in UK and the backlash that he has faced, and on top of it, the trouble is just only mounting for Rahul Gandhi. Now he is disqualified. The Lok Sabha Speaker has taken his decision. Viewers, let us remind you that it was just yesterday that a Surat court had convicted him in a criminal defamation case where he had made some controversial remarks. Aishwarya Kapoor, our executive editor for politics, is joining us on the phone line. Aishwarya, we were just talking about how the Congress has been struggling to keep its house together, to revive itself in the country as a political party. And after Bharat Jodo Yatra, we have seen that there are numerous occasions where Rahul Gandhi's gimmicks are only backlashing, are only failing him even further. Well, at this point of time, we just need to see there you are going to see a surge in meetings. You are going to see surge of these protests. You are going to see Congress hitting the roads. You are going to see Congress party trying to rally behind Rahul Gandhi, trying to show that they're all so loyal to the Gandhi. But at the end of the day, will someone at the end of the day really think about the Congress party? Will someone really think from where to where Congress party has been brought just because they want to rally behind one family? Just for one point, will they think that Rahul Gandhi has been disqualified as a member of parliament? Disqualified on rules. They cannot term political vendetta. The courts, are they saying that the courts are also working on the behest of the government? Is that the allegation of the Congress party? Then they need to stand in front of the court and say that. Can they? No. It's only in the media they come out and they
holds a similar posture of political vendetta when and every time there is something to do with Rahul Gandhi, but this time we need to see he has been disqualified. I would urge, if we can put that notification back on, you read. He is no more a member of parliament. He is an ex-MP. He is an ex-MP now. The Congress party should get up and smell the coffee. Yeah, we have Kashi Venugopal speaking. Kashi Venugopal, National General Secretary, Congress. Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times, when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi as like Abhimanyu. Four corner they are cornering with conspiracy. Once they sent Congress reactions coming in from over Rahul Gandhi being disqualified as a lawmaker, as an MP. Lok Sabha Speaker has taken this decision and Rahul Gandhi has today been disqualified. Political storm, of course, it's erupting and reactions from all corners. Congress, of course, yet again calling it targeting, and we've seen for the past 24 hours how they've been calling it a targeting of Rahul Gandhi and silencing. Aishwarya, our executive editor for politics, Aishwarya is back with us on the phone line. Aishwarya, we are seeing this for the past 24 hours and still we are getting some tweets from Congress party, even Priyanka Gandhi Vadra, who's saying that we not be silenced. They're talking they're calling it freedom of expression, that this is, this is kind of, silencing of the opposition. And they are kind of now justifying the remarks he has made against a community. On one hand, they talk about Bharat Jodo and they talk about peace and love and unity. Well, absolutely. But first, if we could directly go to Congress leader Lokesh Jindal. Lokesh Jindal, is the Congress party still calling it a political vendetta, Lokesh? Are you still calling it political vendetta, Lokesh? Aishwarya, do you have any basis to justify BJP's action? The due process, is this BJP's action or is this the court action? No. The Lokesh, criminal is procedure this court action or is this BJP's action? Lokesh, I'm asking you point blank. Please answer. Please do so. The Criminal Procedure Code 202, was it followed in essence? No. Defamation Law 101, was it followed in essence? No. Why is it that the complainant went in March 2022 to the Gujarat High Court to stay the entire proceeding, claiming he has all the rights of evidence? Lokesh Jindal, you should know better. Every Indian citizen has that right to do so. How come suddenly evidences emerged in February 2023? Just after the Hindenburg scam? No, listen. Aishwarya, media is one of the fourth pillars of democracy. I would repeat again. Media is the fourth pillar of democracy. Opposition holds the executive responsible. That's how democracy functions. Now you cannot cut the head to cure a headache. BJP is cutting its nose to spite its face. Again, I'm repeating. This tendency of doing away with the opposition, to establish a single party rule, to completely subvert the democratic system is disastrous. It is dangerous for the entire political system altogether. I would again repeat, over here, Lokesh Jindal, strong with Rahul Gandhi. In fact, the entire country will stand strong. Lokesh Jindal, and this will go down in history as one of the...
Lokesh, you are saying the whole country stands. I am asking whether the Congress party stands with Rahul Gandhi anymore or not. Doesn't the Congress party realize that it's high time? We are proud of That you get a real leader at the helm of affairs, Lokesh. No, listen. Rahul Gandhi is a former MP now, Lokesh. The leader who in 2013 tore the ordinance that would have protected any convict against disqualification. That very leader who has always been committed to clean politics. The leader who has stood for what is right, and today he is standing for what is right. We are proud that he has taken a stand for democracy. Lokesh, and he will come out stronger from this entire turmoil. In your excitement, are you forgetting, very humbly I am saying, are you forgetting that the man you are referring to is already on bail on one case, and he has just taken a 30-day bail in this criminal defamation case as well? The man about whom you are talking so highly has brought Congress party to a level which could have not only unheard, unimaginable. Don't you feel, Lokesh, as a real true congressman, I am asking you, Lokesh, please, and I'm asking you as a political reporter today. I'm asking you, don't you feel that it's high time that today a Congress party get a leader at the helm of affairs who can once again get back Congress into the fray? Get back Congress into the competition. Don't you want to defeat the BJP? At least don't you want to give BJP a competition? Please answer, Lokesh. Let me clarify what a congressman is. A congressman is not someone who simply belongs to the Congress party. Is not equal to Gandhi. Yeah. Please, Aishwarya, give me an audience. Give me a fair audience. Please. Congressman means somebody who is dedicated to an ideology. An ideology which believes in... But what is that ideology? Lokesh, I have to stop you. I didn't want to. Lokesh, I didn't want to intervene, but I have to. What ideology is this, Lokesh Jindal? That ideology is to go on overseas ground and question your own democracy. What is that ideology? To question your own government on foreign land, Lokesh? It's unheard of. Aishwarya, if you will not allow me to answer, if you'll keep answering, keep asking me questions, how will I answer because you used the word allow me to answer one question. I am saying what ideology is that? Please. Let me explain the ideology to you. When the laws are formulated by the representatives of the people. Lokesh Jindal, I'm stopping you there. I have senior Congress leader Acharya Pramod Krishnam joining. Acharya ji, अब राहुल गांधी सांसद नहीं पूर्व सांसद है. आपकी बात सत्य हो गई. आपको मालूम था आचार्य, आपने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के नेता राहुल नहीं प्रियंका गांधी होने चाहिए. आपको मालूम था क्या आचार्य जी? सीधा पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए आज तो. जी आचार्य. So I am going to ask that question to Acharya Pramod Krishnam again, Lokesh Jindal, because I know so for a fact that at least there is the top leadership. There is no more an old school and a new school of thought in Congress. They're all one and they're divided right in the middle. Can Rahul Gandhi really lead the Congress? And now when he has been disqualified on a criminal conspiracy case, Lokesh Jindal, if you can still hear me, there are leaders who are calling out. So that's the fact, viewers, that what has happened is that Rahul Gandhi has been... जा रहे हैं जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके पूरा उनको सारा अवसर देकर एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। देखिए, जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है
तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन के विषय पे किया। लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते, तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे। गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होते हैं। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा मिली। Central Minister Bhupendra. So reactions now. Reactions are. करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे हैं लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है, उसकी जांच होना चाहिए। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहां जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, और मोदी जी को मजबूरी में ये जेपीसी लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम आखिरी दम तक इनसे हिसाब मांगेंगे। अब सर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? उधर वो तो खड़गे जी तय करेंगे। उधर नड्डा जी कह रहे हैं कि अरे नड्डा जी, अरे एक बात सुन लो, नड्डा जी आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के हैं, आपने कभी ओबीसी के बारे में कभी बात की है? अरे ओबीसी का आरक्षण किसने किया है? उस समय जनता दल में हुआ, आपने जनता दल का समर्थन छोड़ दिया था मंडल कमीशन की वजह से। आप कहां की ओबीसी की बात करते हैं? आप लोगों को उम्मीद थी इतनी आनंद। और दूसरी बात यह है, ये कह रहे हैं मोदी समाज। अरे मोदी में तो बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं, और अनेक लोग हैं, अपर कास्ट भी है। मोदी बनिया अपर कास्ट हुआ हमारे यहाँ, जैन है। तो ये का झूठ बोलने वाले, मैं समझता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। उम्मीद थी आज क्या फैसला? अरे मालूम था, उम्मीद क्या थी, मालूम था होना ही है। क्या कारण है कि 3 साल पहले एक मुकदमा दायर होता है और चुनाव, उसके बाद 2017 का उनका भाषण है, उसके बाद जो जिसको आपत्ति है वो कहता है कि अभी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और वो कहां जाता है? हाई कोर्ट में कि स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो वहां जज साहब हैं वो राहुल गांधी जी को रिलीफ दे देंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोक से, इनको वापस क्यों नहीं लाते? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? लाओ ना काला धन। इनके राज में काला धन आया नहीं है, यहां से गया है। प्रमाणित रूप से हम कह रहे हैं, प्रमाणित रूप से मैं कह रहा हूं कि जितना काला धन स्विस बैंक में मोदी जी के जमाने में जमा हुआ है और किसी के राज में नहीं हुआ। अगर हाईकोर्ट से आपको उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगी, तो फिर लोकसभा सचिवालय इतनी हड़बड़ी में क्यों? क्योंकि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है। थैंक यू सर। वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग द So that was right, and I have senior Congress leader Acharya Pramod Krishnam हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी,
आपको तो लगता है पहले से मालूम था, आपने तो पहले ही कह दिया था राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी होनी चाहिए कांग्रेस की नेत्री। आचार्य जी देखिए ऐश्वर्य, ये लोकतंत्र का काला अध्याय, दिस इज ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। और जिस तरह से राहुल गांधी जी का कन्विक्शन हुआ, और कन्विक्शन में एक अपील करने की उस अवधि का इंतजार भी नहीं किया गया, और भारतीय जनता पार्टी सरकार और लोकसभा सचिवालय ने आनन फानन 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया है। उससे ये साफ हो जाता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नफरत है जो बीजेपी के दिल में भरी हुई है, विपक्ष को मिटाने की एक साजिश है। तो आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन के रूप में जाना जाएगा। नहीं आचार्य जी, आप क्या चाह रहे थे कि कोर्ट धीरे चले, आप क्या चाह रहे थे कि संसद का सेक्रेटेरिएट धीरे काम करे, क्योंकि बात किसी और की नहीं राहुल गांधी की हो रही है, इसलिए आचार्य जी यहाँ भी वीआईपी ट्रीटमेंट? नो, बिल्कुल नहीं। अदालत में जो मुकदमा दर्ज हुआ वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दर्ज हुआ। फिर अदालत ने जो फैसला दिया उसमें अपील की अवधि भी शामिल करी। ऐसी कौन सी जल्दी थी, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, ऐसा कौन सा काम रुके जा रहा था जो राहुल गांधी जी को कन्विक्ट हुए अभी 24 घंटे नहीं भी थे, कम से कम अपील करने का मौका तो दिया जाता। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये बीजेपी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रही है। लेकिन अब आचार्य जी, आप जैसे कांग्रेसियों को तो खुश होना चाहिए। आई थॉट दैट यू विल बी हैप्पी आचार्य प्रमोद कृष्ण, दैट नाउ द लीडर यू वांटेड टू लीड प्रियंका गांधी, शी कैन कम इन फ्रंट। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, क्या राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने से, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने से राहुल गांधी समाप्त हो गए राजनीति में? अरे हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम हर अदालत में जाएंगे, क्योंकि हम अब ये मानते हैं कि हमसे कोई और सहारा बचा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक सहारा है, वो है जनता का। और हम जनता की अदालत में जा करके कहेंगे कि हमारी गलती कुछ नहीं है, हमारा गुनाह कुछ नहीं है, लेकिन हमें सजाएं दी जा रही हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें बर्बाद करने की साजिश हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो जनता की शक्ति बचा सकती है। तो जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। ऐश्वर्य, हम जनता की अदालत में जाएंगे, विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। थैंक यू वेरी मच। चुप नहीं बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ I am joined by senior congressman and former multiple time chief minister, Mr. Harish Rawat. Mr. Harish Rawat, how do you see so? Are you also calling it political vendetta, sir? Hello, I'm Harish Rawat. जी हरीश जी, मैंने कहा क्या are you also seeing this as political vendetta? Yeah, definitely. It is a planned vendetta. The moment that Rahul Gandhi raised the issue of Adani's how he became the wealthier from 609 to number 2 in the world ranking, तो उस दिन से ये तय हो गया था कि अडानी को बचाना है तो राहुल गांधी को संसद में नहीं होना। बट ये तो कोर्ट का निर्णय है। 4 साल में हम कोर्ट पर नहीं उठा रहे, 4 साल से ये केस चल रहा था, तो पैरोकारी पूरी ताकत लग गई कि ये इसका फैसला जल्दी से जल्दी आए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि फैसला आने में और उनकी सदस्यता समाप्त होने के आदेश निकलने में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इतनी देर कैसे कर दी? उनको तो 1 ही घंटे के अंदर आदेश भी निकाल देना चाहिए था, मेंबरशिप उनकी समाप्त हो जाए, ताकि कहीं अपील न कर ले। कोर्ट कह रहा है कि अपील के लिए 1 महीने का समय देते हैं। हाँ, कोर्ट कहता है 1 महीने का समय देते हैं, और ये मेंबरशिप समाप्त करने के लिए इतने तत्पर हैं ताकि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस दिन से कहा कि मुझे समय दीजिए, मैं अपने पर लगे आरोपों का पार्लियामेंट में जवाब देना चाहता हूं, लोकसभा में जवाब देना चाहता हूं, भाजपा हिल रही है, डरी हुई है उस दिन से, क्योंकि अडानी का सत्य देश के सामने आएगा तो भाजपा नंगी हो जाएगी, सरकार नंगी हो जाएगी, इसलिए सब किया गया है। पर हरीश रावत जी, आप एक पुराने कांग्रेसी हैं, आपने कांग्रेस का समझे, आपको नहीं लगता कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है? कोर्ट ने उनको सजा दी और उसके बाद नियम के अनुसार अगर आप होते, चाहे कोई और होता, तो सबके साथ लॉ से ऊपर कोई नहीं है। हम कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे,
लेकिन लोकतंत्र में जनता से ऊपर भी कोई नहीं है। भगवान और जनता, हम दोनों की शरण में जाएंगे। हम जनता जनार्दन की शरण में जाएंगे। तो आपको लगता है कि जनता आपकी मदद करेगी? 78 में इससे शक्तिशाली लोग थे, बड़े बड़े पराक्रमी लोग थे, देश के इतिहास को बनाने वाले लोग थे। और जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी पर ज्यादतियां की और संजय गांधी जी पर ज्यादतियां की, तो देश की जनता उनके पक्ष में आकर के खड़ी हुई। और हमें पूरा भरोसा है कि देश की जनता जनार्दन राहुल गांधी के पक्ष में आकर के खड़ी होगी। एक नौजवान आप लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, एक विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है, एक। और आज मुझे बेहद खुशी है इस बात की, जो हमसे असहमत राजनीतिक दल भी थे, वो भी आज राहुल गांधी जी के पक्ष में आ रहे हैं। इस बात तो कह रहे हैं अन्याय है, गलत है। लेकिन एक बार ये कि इसके अंदर उनका कुछ भी नहीं है, जो भी है जो भी है लिखती है और इसके ऊपर कोई नहीं, तो आप इसको कैसे गलत पाते हैं? उससे आप कैसे उसको नकारें? आक्रमण करते हैं इसका मतलब है सारे नेहरू बिरादरी पर आक्रमण करते हैं। ये तो उड़ीसी में बातचीत में इस तरीके की बातें होती हैं। और इसको एक ऐसा प्रसंग बनाना और जिस तरीके और जिस व्यक्ति ने बनाया है, ही इज नॉट द ऑर्डिनरी मोदी, वो भाजपा का शीर्ष लीडर्स में से है गुजरात के। ये जो फॉर्मर मिनिस्टर एंड MLA पार्टी का शीर्ष फंक्शनरी है। हाँ, तो ये केस जो है इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द भाजपा। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी हैं तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि ये एक्शन हो सकता है। Somewhere or the other, it's being felt that only because it was Rahul Gandhi, or it is Rahul Gandhi, that the Congress party feels that he should be over and above the law, sir. Is that true? ये इसके विपरीत बात है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि मेंबरशिप नहीं जाती उनकी, तो हमें आश्चर्य होता कि भाजपा लीडरशिप कहीं लोकतंत्र में ये तो नहीं समझ रही है कि एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए, और उनको वो ये समझ तो नहीं जा रहे हैं। ये तो उनका एजेंडा था टू एलिमिनेट दी अपोजिशन पार्टी। तो उस एलिमिनेशन के प्रोसेस में लीडरशिप को समाप्त करने के लिए सब किया जा रहा है। ये तो हमें आश्चर्य होता है यदि वो नहीं करते। Okay, so that was senior Congress leader, multiple-time Chief Minister Harish Rawat speaking to Republic, saying that the Congress is calling it as a political vendetta and Congress is going to hit the roads on this issue. But as far as the Congress party is concerned, it is high time that now at least the Congress party understands that just by rallying behind a Gandhi, rallying behind a family is not going to get them anything. They are not going to achieve anything. And at the end of the day, if the Congress party really wants to regain the trust of the people, they would have to get the true leaders, the leaders who are connected with the ground, to the people out. But as far as today's developments are concerned, as we speak, viewers, there's a parallel meeting happening between Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Yes, the brother and sister are meeting. The former member of parliament, Rahul Gandhi, is meeting Priyanka Gandhi as we speak. And while that also happens, there is another meeting called at 5 p.m. by the AICC president. Yes, I've joined in by a leader on the phone line. If I could just be told the name again, please. Yes. So I have senior BJP leader, Javeer Shergill. Javeer, you are one of those who understands the Congress also pretty well. The Congress is calling it as political vendetta, Javeer Shergill. How does the BJP respond to that? It's tragic that in today, for Congress, the law of the land, the rule book, the Supreme Court judgments have become Kala Akshar Bhains Barabar. The Congress's objection to disqualification stinks of Congress's double standard and hypocrisy. Mr. Rahul Gandhi himself supported the law and rather tore the ordinance, lowering the bar of conviction from 5 years to 2 years. Today, when the law supported by Rahul Gandhi has been implemented on Rahul Gandhi, Congress is crying democracy is in danger, which reeks of double standard and hypocrisy. The truth of the matter is, Congress wants a free pass
an open license for Mr. Rahul Gandhi to break law, to abuse backward community, to malign judiciary, to malign institutions by raising this false bogey that there is dictatorship in the country. I hope the Congress brigade now learns a lesson that neither the court of law nor the court of public will tolerate Mr. Rahul Gandhi's irresponsible, factually incorrect and insulting statements towards any institution, people, community and the nation. No, but Javi, they are not only calling their parallel meetings, but they're also hitting the roads. They are saying that they're going to protest not only in the parliament, Javi, but they're also going to protest on the streets. And not only of the national capital, but they say across the country, as they are calling it, as the black day in Indian democracy, Javi. So they seem to be backing Rahul Gandhi. This protest is nothing but a hollow PR stunt being organized by Mr. Rahul Gandhi's psycho friend Darbaris to please Mr. Rahul Gandhi. This protest will not resonate with the people of India. That's the point which we should understand. The rule of law and Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment of 2013 and 2018 is very clear that an MP will be immediately disqualified if his conviction is not stayed. Mr. Rahul Gandhi and his protesters can keep acting like jumping jacks, but the People's Court and neither the Court of Law will be swayed or weighed by these cheap PR stunts. Rather, by the demonstrations, by the protest, the Congress is validating, accepting Mr. Rahul Gandhi's politics of abusing backward communities. Let the nation not forget, and through Republic I want to reiterate, Mr. Rahul Gandhi has not been convicted in some freedom struggle case. Mr. Rahul Gandhi has not some won for war for the nation. Mr. Rahul Gandhi has not come back from Kargil. He has been convicted of a crime of abusing the OBC community of this country, for which he does not deserve a badge of honor, for which he deserves the imprisonment and the fine which he has been given for the court of law. But Jaivir Shergill, I would just want you to stay for 30 more seconds. The terminology which you use, the coterie of Rahul Gandhi, those people who believe just to rally behind a Gandhi can help them achieve their target really need to smell the coffee. Jaivir, they are so far away from the truth, from the reality. Jaivir. That the psychophancy within the Congress party has become sickening, nauseating, that they are hero-worshipping a leader who has made abusing the backward community, defaming the nation on foreign soil as his favorite hobby. The Congress existence today is in question mark because of Mr. Rahul Gandhi's misadventures. Rather than giving a reality check to Mr. Rahul Gandhi, advising them to keep a control on his tongue, by garlanding Mr. Rahul Gandhi, the entire Congress brigade is guilty of rubbing salt on the wounds of the OBC community. Absolutely, Jaivir. Thank you very much. And I'm just going to go to Rahul Gandhi's residence. But first, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party leader, former Chief Minister of Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav is speaking. If you could just listen in to Akhilesh Yadav first. लोग किसी की हत्या नहीं कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। और जहां तक हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम को कोई मरवाने वाला नहीं है। उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। अगर उनको जान का खतरा हो, कुर्सी का खतरा हो, तो वो किससे है? मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों से नहीं है। हम तो उन्हें कुछ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते ही नहीं इस बात को। सर वो कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को सम्मानजनक शब्द से कहते हैं और वो हमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल। कभी जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो यही कहते हैं कि Directly go to our colleague Anuj, who's standing right outside the residence of Rahul Gandhi. Yeah. Anuj, you just flashed that information that Priyanka Gandhi has come to meet Rahul, or then vice versa. What's the latest now? Anuj, over to you. What's the latest there? Well, Aishwarya, at this point in time, let me tell you that Rahul is inside. Rahul Gandhi is very much inside, what we have been told, but I can see the alert of the security. So this means that there is someone, either Rahul Gandhi is moving outside, or it is expected that Priyanka is going to come back again because she left earlier. But Rahul Gandhi is very much inside. Prior to that, Aishwarya, let me also tell you that there are several reactions
which is coming in from the Congress party, whereas the Congress party is again backing Rahul Gandhi. But if we talk about the important meeting which is already lined up for 5 p.m, this is going to happen at the AICC headquarters. That's the Congress headquarters in the national capital. So this is the meeting to decide the future course of action, that what exactly is going to be the next course of action. On the other hand, I'll ask my video journalists to continue, give you the sense from the ground that what exactly is happening, because the security has been already increased. On the other hand, yes, we are expecting some action, because this exactly is the exit gate from where Rahul Gandhi leaves, or if somebody enters. Anuj, absolutely. Carry on, Anuj, carry on. Well, exactly, Aishwarya. We are just waiting if anyone is going to come, if Priyanka is expected to come over here. Normally, when we used to see this kind of alert outside Rahul Gandhi residence, then this is some kind of movement. Either Rahul Gandhi is going outside or someone else is coming inside. So this is something what we are expecting, because the alert could be seen of the security. Whereas if we talk about 5 p.m. meeting, this is going to be an important meeting of the Congress party, where they are going Anuj, to decide I'm just going to stop you briefly action. there. I've joined in by the Congress spokesperson of Punjab, Hardeep Singh. Anuj, I'm just going to briefly stop you there. Yes, I've been told that CISF has added an outer ring to security at Rahul Gandhi's residence. But I have Congress leader Hardeep Singh Kingra joining in. Hardeep Singh ji, why can't the Congress party for once accept the rule of the law? It's the rule of the law, Hardeep Singh. Yeah, look, but this is the rule of the law of the lowest court. There are courts higher than this. There is a court which is a court of the district judge. So, there is a court are you demeaning that court? High court. So don't. So no, but the decision of the honorable court will have to be contested. Are you saying on national television, just because it's a district court, it's a lower court, you will not accept the judgment? No, I never said we will not accept judgment. I said there is a judicial review in the higher court, and the Congress will file an appeal in the higher courts to have this judgment reviewed. That's it. How can I say that we don't accept the verdict of the court? I never said it that we can't accept the verdict of the lower court. What I'm saying, court Mr. of any Kingra, level, it's a court verdict. We will have to accept it. Good but on at your the same part that time, you do. there is a judicial why is review the Congress available party for all the protesting? court decisions. That is the strength of the judicial decisions, that you can file a review. Well, it is. But according to the law, sir, if a 2-year or more criminal... Yes, okay, I am getting that movement. Now, yes, I can just see these live visuals coming in. Over to you, Anuj. Anuj, over to you. Aishwarya. Yes, Aishwarya, this is Sonia Gandhi. Aishwarya, this is Sonia Gandhi, who has just reached at the residence of Rahul Gandhi. Now this is going to be the mother who is going to meet the son after the disqualification. Yes, Sonia Gandhi is there. We have seen in the visuals, this is the carcade of Sonia Gandhi, where Sonia Gandhi has just entered the residence of Rahul Gandhi. Prior to that important meeting at 5 p.m, this is to happen, and this is going to be the very, very important discussion where Sonia Gandhi and Rahul Gandhi is meeting now. This meeting is going to decide the future course of action, what exactly is going to happen with Rahul Gandhi, and what is going to be the future of the Congress party, and what is going to be the future of Rahul Gandhi. So that is going to be the very, very important meeting, because every time what we have seen, Aishwarya, you and me both have seen, this is Rahul Gandhi who is visiting Sonia Gandhi's residence. But this is Sonia Gandhi who is coming to Rahul Gandhi's residence, and Sonia Gandhi now at this point in time is going to meet Rahul Gandhi as he is no more a MP. As he is no more a MP. इस समय जो देखे तस्वीरें देखिए ऐश्वर्या, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, सोनिया गांधी पहुंची है राहुल गांधी से मिलने, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, क्योंकि जो 5 बजे एक बैठक है जिसमें ये डिसाइड करना था कि आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उससे पहले जो मदर हैं, जो माता जी हैं राहुल गांधी की, सोनिया गांधी जो प्रेसिडेंट रही हैं, जो कर्ता धर्ता कहलाती हैं कांग्रेस पार्टी की, वो राहुल गांधी से मिलने आई हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक ये दर्शाएगी ऐश्वर्या, इसमें ये सब डिस्कशन होगा कि आखिर आगे की क्या रणनीति है, राहुल गांधी के फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आखिरकार कौन चेहरा रहेगा। क्योंकि देखिए अभी तक जितनी भी लॉबी हमने देखी है वो लगातार राहुल गांधी को बैक करती रही है। अभी भी देखिए सुबह से एक के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं। कल से कांग्रेस पार्टी इस चीज में लगी थी कि किस तरीके से यूनिटी दिखाई जाए, ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में लेके आके आज पार्लियामेंट से विजय चौक तक का एक मार्च निकाला गया और उसमें दिखाया गया
दर्शाया गया कि एक यूनिटी है और जो भी राहुल गांधी के साथ हुआ है वो गलत है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी का। लेकिन उसके बाद जो होता है ऐश्वर्या वो सबके सामने है कि रद्द कर दी जाती है सदस्यता। अब सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी के एक लीडर जो एमपी हुआ करते थे वायनाड से, जो पहले अमेठी की सीट हारते हैं, अब वायनाड से भी एमपी नहीं रहे और वो प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी कहां खड़े होते हैं, व्हाट इज द स्टैंड, राहुल गांधी कहां खड़े होते हैं, इस पे अब डिस्कशन होगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। देखिए सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर हमने अमूमन नहीं देखा है कि आती हो। हमेशा पहले अगर इतिहास की बात करें तो यही देखा गया है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बैठक है, जितने भी महत्वपूर्ण डिस्कशन है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर जाते हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी मिलकर सोनिया गांधी के घर जाते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए इस समय सोनिया गांधी खुद राहुल गांधी के हो रहा है, क्योंकि एक मां अनुज आप बिल्कुल हिंदी में बोलते रहिए बिकॉज यू आर लाइव ऑन बोथ आवर चैनल्स, बट आई वुड जस्ट वांट टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू पर्सपेक्टिव दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज अ मदर इज आल्सो गोइंग टू मीट हर सन. A mother is also going to meet her son, a son who has just lost एक माँ अपने बेटे से मिलने जा रही है जिस बेटे को अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. और दिक्कत यह है अनुज कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जो गांधीज हैं, द गांधीज आर जस्ट ओवर एंड अबव द लॉ. कि अगर आप राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, आपको याद होगा जब इनसे एसपीजी का कवर हटाया गया था तो ऐसे हो गया था जैसे हिंदुस्तान में भूचाल आ गया है. यही नियम, यही लॉ हर एक सांसद के लिए है, चाहे वो राहुल गांधी हो या आप हो या मैं हूं या कोई भी हो. तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, क्योंकि गांधी है तो वो नियम से ऊपर है. दे आर नॉट ओवर एंड अबव द लॉ. बैक टू यू अनुज. अनुज बताइए क्या चल रहा है, फुल फ्रेम. अनुज बताइए क्या चल रहा है लेटेस्ट, क्या वहां पे प्रियंका गांधी भी आ गई? बिल्कुल ऐश्वर्या, बिल्कुल ऐश्वर्या. देखिए यही सब बातें जो है हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रही है. ये जो लेगेसी की बात है, ये अगर लॉबी की बात करी जाए कि वी बैक राहुल गांधी, एक लॉबी है जो राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, एक लॉबी है जो प्रियंका गांधी को बैक करती है. हमने देखा था किस तरीके से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई थी. मुझे याद है आज भी मैं अमेठी में मौजूद था जिस समय ये अनाउंसमेंट हुआ था कि अब प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी. लेकिन अगर आज की बात करें ऐश्वर्या, तो सोनिया गांधी अब इस समय दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, राहुल गांधी से मिल रही है. सदस्यता रद्द होने के बाद सबसे पहली मुलाकात अगर देखी जाए तो अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो रही है. देखिए 5 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है जो एआईसीसी के अंदर जितने भी दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी के, जितने भी सीनियर लीडर हैं, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी जो अब प्रेसिडेंट भी हैं वो खुद भी मौजूद रहेंगे. लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं. सिर्फ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा इस बैठक के अंदर कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है कांग्रेस पार्टी की. तो यहां डिसाइड करा जाएगा कि आखिर किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, कहां राहुल के कदम जाएंगे, राहुल के लिए क्या राह चुनी जाएगी, ये इस महत्वपूर्ण बैठक में डिसाइड करा जाएगा. जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि एक मां भी बेटे से मिलने आई है, लेकिन हम जानते हैं कि मां भी और बेटे भी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं. कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी. 2019 के चुनाव के बाद हमने देखा कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद इंटरिम प्रेसिडेंट रही और उसके बाद हमने देखा कि किसी तरीके से फाइनल नहीं हो पाता कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं. लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो सुबह से ही देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार, हालांकि बात करें तो कल से ही लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती नजर आई है कि राहुल गांधी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, राहुल गांधी ने गलत नहीं किया है और ये हमारे खिलाफ एक साजिश है. वहीं कोर्ट ने तो फैसला दिया ही दिया, लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से आज लोकसभा ने यह साफ कर दिया कि आपकी सदस्यता रद्द करी जाती है. अब उसके बाद कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी पहले अमेठी से चुनाव हारते हैं. अमेठी से चुनाव जिस समय हारते हैं तभी वो दूसरी एक सेफ सीट से चुनाव लड़ते हैं जो वायनाड की सीट थी. अब वायनाड की सीट भी जाना और प्रेसिडेंटशिप भी ना रहना, तो राहुल गांधी आखिर स्टैंड कहां करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सवाल है. हमने देखा कि कई सदक से अब तो राहुल गांधी के पीछे ही कांग्रेस पार्टी चलने को तैयार थी और कई सदक से यही चल रहा था कि हमारा नेता राहुल गांधी है. लेकिन अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाती है, वो एक एमपी भी नहीं रहते हैं, तो आगे अब कैसे चला किसी मामले में, तो फिर किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता है. तो और वही जब उसकी कॉपी जब स्पीकर को मिली होगी तो स्पीकर ने अधिसूचना जारी की है. इसके अंदर इतनी हाई तबाह मचाने की जरूरत क्या है?
आप भी जाइए कोर्ट के अंदर, ऊंची अदालत में जाइए, राहत की मांग कीजिए। अगर आपको राहत मिल जाए तो वापस लौट कर आ जाइए। लेकिन अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी तक किसी मामले में कोर्ट ने जल्द ही इस तरह के मामले में कोई राहत किसी को नहीं दी। सर इसमें कोर्ट ने फैसला दिया तो डेमोक्रेसी की हत्या है। और आपने क्या सच बोला? आप तो गाली दे रहे थे। क्या सारे मोदी चोर हैं? इस देश के अंदर कम से कम 1-2 करोड़ लोग होंगे जो मोदी सरनेम रखते हैं, और अधिकांश पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हैं। क्या सारे लोग चोर हैं? यही आपका सत्य है या यही गांधी की अहिंसा है? तो देखिए, पहले बोल देने से नहीं होता है कि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का, कहावत ना कहा में, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये इनको अहंकार है, इनकी हेकड़ी है कि मेरे परिवार ने देश पर राज किया, मेरे परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका का निर्वाह किया, और हम लोग पैदा हुए देश पर राज करने के लिए। तो देखिए, इस देश में, लोकतंत्र में कोई राज करने के लिए पैदा नहीं होता, जनता चुनती है। और नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 में इस देश पर से लोगों की सेवा करने के लिए उनका चुनाव किया है, और 2024 में फिर एक बार नरेंद्र मोदी लौट कर आएंगे लोगों की सेवा करने के लिए। सर, आपने भी आखिरी दौर में है सुनवाई, उसको लेकर के क्या आपने देखिए, इसी मामले को लेकर मैंने भी पटना के that was Sushil Modi, and from Sushil Modi I'm going to senior Congress leader Rashid Alvi. Rashid Alvi जी, आपने सुना बीजेपी को भी और कांग्रेस के नेता लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं राशिद जी कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। क्या आप भी इसको पॉलिटिकल वेंडेटा मानते हैं राशिद अलवी जी? ये कोर्ट के डिसीजन के बाद हुआ है सर। देखिए, पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही। ये बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के नेता किस तरीके की जबान बोलते, हर रोज गांधी परिवार के खिलाफ बोलते हैं, हर रोज मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। क्या ये जुमला जो बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं, फिर तो उन्हें सबको 2-2 साल की सजा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि सारे एक कम्युनिटी के लोग ही क्यों बेईमानी कर रहे हैं, यही जुमला तो था उनका। और आपको याद होगा, अभी 1 साल पहले, जस्ट 1 year ago, Delhi High Court has issued a direction to register a case against one of the leaders of Bharatiya Janata Party. That High Court judge was transferred, and that leader was provided security. What is this? This is the justice. यही लोकतंत्र है, यही justice है. We have seen from our own eyes. High Court judge was transferred. Hello? But this is also, yes sir, I can hear you and the country can hear you right now, Rashid Alvi ji. But this is happening after a judgment of a district court. And according to the rule book, sir, 2 years or more, any criminal case, if there is a 2 year plus more, the member of parliament, irrespective whomsoever he or she is, has to be immediately disqualified. So the rule book is being followed. You yourself are a former MP. You are exactly aware of the rule book and the rules, sir. And this is the maximum punishment which was given to Rahul Gandhi. Do you justify it? How can you justify it? 2 years punishment has been given. Yeah, I'm telling you. 2 years punishment has been given with this motive that his membership should be finished from the parliament. It is not punishment, and you see from the High Court. Now we are going to appeal in District Court, then High Court, then Supreme Court, and he will come out from the Superior Court against the order of this court. We are sure about it. But may I ask you? But may I ask a counter question to you, sir? That just because he is a Gandhi, just because he is Rahul Gandhi, should the punishment be less for him, sir? Cannot. Can I just flip that question and ask you? Just because he is Rahul Gandhi, the punishment should be less? Sir? No, not at all. Not at all. Rahul Gandhi is also a citizen of this country like other citizens. But Rahul Gandhi has been punished only because he is Rahul Gandhi. Important thing is this. If you would have been there, I'm sure about it. आपको punishment नहीं मिलता.
It is only Rahul Gandhi who has got punishment only because he is Rahul Gandhi. It is unfortunate. And now it is my considered opinion, time has come. All MPs of Congress party should resign immediately and come out from the parliament. Parliament itself has become absolutely irrelevant. Sir, are you saying that all MPs of the Congress party are going to resign? Are you telling us something there? I'm not saying they are going. I am saying they should resign from the parliament. Absolutely, Mr. Rashid Alvi. I'll come back to you. I'm just going to my colleague Anuj. Sonia Gandhi is leaving the residence of Rahul Gandhi. I'm so sorry, Rashid Alvi ji. मैं माफी चाहता हूँ, Rashid Alvi ji. Sonia Gandhi is leaving the residence of Rahul Gandhi. Anuj, over to you. Anuj, over to you, Anuj. Anuj, बोलिए. आप इस समय दोनों चैनल पे लाइव हैं. बोलिए, Anuj. Yes, ऐश्वर्या. Anuj, over to you. Yes, ऐश्वर्या. जी ऐश्वर्या, देखिए ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं. अब अलर्ट हो गया है दोबारा से. जी बिल्कुल, दोनों अलर्ट हो गया है फिर से. और फिर से हम देख रहे हैं कि जो सोनिया गांधी का कैवलकेड है, जो सोनिया गांधी का काफिला है, वो स्टैंड बाय पे लग गया है. तो देखिए अब किसी भी पल सोनिया गांधी जो है वो निकलेंगी. जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात करने के बाद सोनिया गांधी किसी भी पल यहाँ से निकलेंगी. देखिए जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे थे कि देखिए वो एक गाड़ी निकली है सफारी, उसमें सोनिया गांधी निकल चुकी हैं. सोनिया गांधी निकल गई हैं. 15 मिनट तक देखिए ऐश्वर्या ये बैठक रही और सोनिया गांधी का जो कैवलकेड है, जो सोनिया गांधी का काफिला है, वो जा चुका है. राहुल गांधी अभी भी जहां तक अनुमान है कि वो घर के अंदर है, क्योंकि उनका काफिला अभी यहीं नजर आ रहा है. तो सोनिया गांधी आई थी, उनका काफिला और सोनिया गांधी मुलाकात करके निकल चुकी है. 15 मिनट ये मुलाकात रही. अब 15 मिनट में क्या कुछ डिस्कशन हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है ये डिस्कशन, ये मुलाकात, ये जो बैठक है, ये उससे पहले हुई है. जो 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी. उससे पहले माँ बेटे के बीच में कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए दो जो पुराने अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, जो दिग्गज नेता रहे कांग्रेस पार्टी के, उनके बीच में ये मुलाकात हुई है. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात होती है क्योंकि इसमें कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी. सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दो जनों की ये मुलाकात होती है. इस मुलाकात में क्या कुछ निकल के आता है या क्या डिस्कशन होता है, इसका हमें इंतजार रहेगा. लेकिन 5 बजे से पहले ये मुलाकात हुई है. 5 बजे से पहले ये मुलाकात राहुल गांधी के घर पे हुई है. हमने तस्वीरों में 15 मिनट पहले दर्शकों को दिखाया था कि सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने पहुंची हैं. 15 मिनट तक ये मुलाकात चली. 15 मिनट की मुलाकात के बाद अब सोनिया गांधी निकल चुकी है. वहीं तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो दिल्ली पुलिस की तैनातगी है, वो बहुत ज्यादा राहुल गांधी के घर पे कर दी गई है. हालांकि अभी तक सोनिया गांधी के अलावा और कोई लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की यहाँ नहीं पहुंची है. लगातार जो है बातचीत चल रही है कि 3:45 में मैं आपको बता दूं अभिषेक मनु सिंघवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एआईसीसी दफ्तर से. उसके बाद 5 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें ये सब कुछ डिसाइड करा जाएगा कि आखिर क्या कुछ अगला कोर्स ऑफ एक्शन. Anuj, hold on for a second. We know Sonia Gandhi is leaving. But I'm being joined right now by Mahesh Jeth Malani, senior lawyer and MP of the Rajya Sabha. Thank you for joining us here. And being a parliamentarian, you know how serious the Constitution is about certain things. This time under the RPA, when there's a criminal case, a conviction, no matter who you are, which surname you have, which caste, which creed, you have to leave the parliament. He has been disqualified. Your first reaction coming in on Rahul Gandhi? Well, I mean, after yesterday's order of conviction and sentence, and particularly since the sentence was 2 years, there was no other consequence except that he had to be disqualified. That's the law. At the moment you get a conviction for an offence of punishable with 2 and the sentence is 2 years, then you stand automatically, by law you stand disqualified. So this is only a consequential action which the speaker was bound to take. But the root cause is the judgment of conviction in the defamation case. Mahesh Jeth Malani, now what next can we expect at this point of time? Because we know that the Representation of the People Act, and if you could tell our viewers as well more on that, if a person is convicted to 2 years or more in jail, shall be disqualified and shall continue to be disqualified for
many more years, up to 6 years or more after serving their term. So that is a very, very big law, which means essentially, if you could tell our viewers, does that mean that he will be disqualified for years to come? Can he even stand for elections now? Well, I mean, look, he's got a right to go for appeal to the Sessions Court, which should be the whole focus. I mean, the Congress party has completely got it wrong. This case has been going on since 2019. It was part of after an election speech which he made in 2019. So, there is no political dimension to it. I mean, unless you're accusing the judiciary of being political. This is a straight question of a defamation case and sentence in a court of law, and it should be dealt with legally. It should be dealt with by way of an appeal. And in an appeal, you apply for stay. It's as simple as that. Once the stay of conviction takes place, Rahul Gandhi's seat is reinstated. He resumes his member of parliament seat. So I don't know what the big fuss is. This happens. I mean, you made a defamatory statement prima facie, and now you're convicted. So the remedy lies in a court of law, right? Of course, if you don't get the stay, then there are serious consequences. But why is everybody being so pessimistic? I mean, everybody's been saying that this is a frivolous case, and so all his supporters, all his lawyers have been coming and saying it's a frivolous case. So if it's such a frivolous case and if it's such a motivated case, then just go to the Superior Court and get it stayed. And you'll have your remedy, and Rahul Gandhi will be back as an MP. Instead of all this, staging protests and screaming murder most foul, why don't you do what you're supposed to do? Quietly go to the appellate court and prove your case over there. Right. I just want to bring in my colleague, Samiksha. Samiksha is joining us from our Mumbai studios. Samiksha, go ahead and also speak to Mahesh Jethmalani, who's joining us, senior advocate and Rajya Sabha MP. And Samiksha will take the next question to you, Mr. Jethmalani. Samiksha, over to you. If you can help us understand what are the legal options that Rahul Gandhi has at this stage, and even if he moves the higher court, will his arguments really stand in the court after he moves the court? Yeah, I mean, I have not read the judgment, so it's very difficult for me to comment on how good his case is. But he has a right of appeal. It's a defamation case. Some very eminent lawyers have come on television on his behalf and said there's nothing in this case. Kapil Sibal has said that the judgment will be overturned. Also, as a parliamentarian, if you can explain to us what are the other perks that Rahul Gandhi could lose after being disqualified as an MP? All right, we seem to have lost that connection, but that was senior advocate Mahesh Jethmalani, also a Rajya Sabha MP. And that's, of course, latest coming in. Congress, of course, in a huddle mode as we speak. Sonia Gandhi left just a short while back. A meeting at Rahul Gandhi's residence, which lasted for precisely 15 minutes. We understand Priyanka Gandhi Vadra, along with Sonia Gandhi, held a meet at Rahul Gandhi's residence just a short while back. And we understand that at 5 p.m., another key meet would be held that would be chaired by the top senior Congress leaders that again would decide the future course of action when we talk about the Grand Old Party and particularly Rahul Gandhi after having been disqualified from the parliament. All right, let's take a word from Savio Rodrigues also joining us. Mr. Rodrigues, if I can get your first response. If you can explain to us what are the other perks that Rahul Gandhi would be losing after being disqualified as an MP? Well, I think the Congress is making a mountain out of a molehill. The Surat District Court passed a judgment. Based on the judgment, the Speaker of the Parliament of the Lok Sabha acted in the manner he's supposed to act, which is why Rahul Gandhi has got disqualified. Now, as our learned counsel Mahesh Jethmalani has clearly stated, Rahul Gandhi has the opportunity to go ahead and appeal in a higher court against the Surat Court judgment. However, Congress is using this strategy to cry foul and to cry victim, which is not going to work. Because Rahul Gandhi, over a period of time, he's a habitual offender.
He's an habitual offender that has been making erroneous statements not only in India but out of India as well. The statement against the entire community is absolutely, irresponsible as a member of parliament. And that's the problem with Rahul Gandhi. Rahul Gandhi does not think before he talks, or his advisors that advise him do not advise him in the manner that he's supposed to talk, because he represents India. He represents being a member of parliament, and therefore by that he represents India. So when you make ludicrous statements, when you start targeting Prime Minister Modi and the position of Prime Minister Modi and that of India in your hatred for Prime Minister Modi and the BJP, what you are doing is letting down an entire country. So his statement against an entire community, the Modi community, that particular caste of people, is an absolute insult. Yes, and Mr. Rodrigues, what's absolutely baffling is, yes, and what's very shocking is the fact that several of these opposition leaders have come out in support of Rahul Gandhi, calling it a witch hunt. It's just law taking its course. How do you read into TMC and other parties coming out in support of Rahul Gandhi? See, in most cases, the reason why Rahul Gandhi is got to the place of where he is because he's got sycophancy within his party and from the opposition leaders as well, who see an opportunity to attack the BJP or Prime Minister Modi. Now, it is very clearly evident he's made a statement. The statement's been taken by the court to be an offence and a crime, and that's why a judgment has been passed. Based on that judgment, the Speaker of the House has acted. And he immediately gets disqualified, and that's the reason why he's disqualified. So I don't understand the hue and cry other than propaganda. Because if this would have been any other politician, nobody would have been bothered about it. But the fact that it is Rahul Gandhi, and Rahul Gandhi gets television mileage, and the Congress uses every opportunity to cry foul, and so do other opposition parties, that's what you're seeing. But the law is law for everyone. Rahul Gandhi, because he's Rahul Gandhi, does not get an entitlement, does he? Rahul Gandhi is not above the law. You have somebody who's committed a crime for which a court has passed a judgment, and based on that, the parliament has acted, the speaker has acted in laws and processes that are parliamentary. So where is the confusion? Rahul Gandhi has the opportunity to appeal. If he appeals and he wins the appeal, he can come back as a member of parliament. So why is Congress saying that they genuinely feel that they don't have a case to appeal? Because that's what it seems. And unfortunately, Mr. Rodrigues, Rahul Gandhi continues to stand his ground as well, despite making those remarks way back in 2019. A reaction also coming in. Let's. पूरे बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूरे तरीके से ये देख रही है कि किस तरीके से इनका व्यवहार है। सब लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी को सर आप बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे मतलब देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। All right, so a lot of reactions that have been coming in, and as we speak, Congress, of course, in a huddle mode. Just a short while back, Sonia Gandhi was at the residence of Rahul Gandhi. In fact, Priyanka Gandhi Vadra was also present at this short meeting, which was held at Rahul Gandhi's residence. Meanwhile, at 5 p.m., another key meet is going to take place. Savio Rodrigues, of course, continues to be with us. Mr. Rodrigues, how do you view this? Rahul Gandhi, who continues to stand his ground, saying he's done no wrong. His silence, of course, speaks 1,000 words. The fact that he's not come out and apologized or even regrets the kind of statements he made way back in 2019. But do you think if he moves the High Court in this case, which in this case he will, of course, he has no choice than to move the court, but do you think his arguments will really hold in the court even if he moves the top court in this case? See, he's within his right to move to a top court because the order came from the Surat District Court. He can definitely go to a more higher court to get relief. His inability or his lack of wanting to apologize for his statement is clearly an indication that Rahul Gandhi has no remorse for his statement. He had done it intentionally and he wanted to insult Modi and a community that Modi belongs to and many other people with the surname Modi belongs to. It was an intentional wanting to insult a community. That's what's coming out. Because all he had to do
was to apologize for his statement. But he does not think he's done anything wrong, which clearly means his intent was to insult a community. And therefore, it is right that he's been punished by the court. Does he have an opportunity to appeal? Yes. Will he appeal? I hope he does, because he will get a chance to realize that maybe the higher courts might not listen to his appeal in the manner that he assumes it's going to. Right? But why did Rahul Gandhi make that statement? People like Rahul Gandhi come from aristocracy in politics. And somebody like a Narendra Modi does not come from aristocracy in politics. And therefore Rahul Gandhi believes that he is entitled to make these comments and gets away with it time and again. This time the law has caught up with him. So he has to face the law. If the Congress thinks that Rahul Gandhi is above the law, then I'm sorry. The psychophancy of the Congress is what is getting them to the position that they are today. People have lost faith in one of the oldest political parties of the country because they've got this psychophancy towards Rahul Gandhi and the Gandhi Vadra family. And that's a problem. Because there are many serious Congress supporters in this country, but with each passing day, that belief in the Congress party is dwindling. We'll have to leave it at that. We'll have to slip into a very short break at this point. But interesting to watch out for would be the kind of perks that Rahul Gandhi earlier enjoyed as a parliamentarian that he would now be losing after he's disqualified as an MP of the Lok Sabha. We slip into a very short break, but our top coverage continues as Rahul Gandhi has now been disqualified as the Lok Sabha MP. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए? Sir, I would say Everest is always the difficult one. हालांकि lot of people say sir, Everest में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, but let me tell you sir, Everest remains Everest. Everest is the highest mountain in the world and it will remain so. And I have find Everest to be the most difficult. Most difficult. Most difficult sir. Ultimately crevasses उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं. Ultimately वो लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है. डर लगा कभी? सर आई थिंक डरना भी जरूरी है बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come 5-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana, and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's the second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे ये बताइए. एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? Yes. अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? Climbed sir Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent sir. Then I went to Carsten's Pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट में चढ़ चुका था sir. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Mapes, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's the 7th continent. So the highest mountain is Vinson Mapes. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing in India with, you know, how they've been operating for the last 30 years, assassinating Indian government officials, attacking military bases.
कर्नल जमाल एक बात बताइए ना, आप वहां पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना। बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया, तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, बाद में चढ़ लेंगे, सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। 2015 में when we went, earthquake happened. Then we changed our things to the rescue team, and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन। All right, tracking the big story this hour, Rahul Gandhi, after having been disqualified as member of the Lok Sabha, is now in a huddle with other Congress leaders. In fact, a key meet has been called by top senior leaders at 5 p.m. And just a short while back, Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra were seen arriving at Rahul Gandhi's residence. So yes, definitely a big setback that's coming for Rahul Gandhi. An exclusive conversation. Let's take a look with Subramaniam Swamy as well on Rahul Gandhi's disqualification as the Lok Sabha MP. Congress leader Rahul Gandhi has been disqualified as the Member of Parliament. Joining us now is Subramaniam Swamy ji. Sir, thank you for speaking with us. Now that Rahul Gandhi has been disqualified, Congress and other opposition parties are crying foul over political vendetta. How do you react? Well, Congress has in the past used this power, Parliament, to expel members they didn't like. For example, I was in the emergency fighting against it, and out of anger, they, in November 76, they passed a resolution and expelled me from Parliament. Then Mrs. Gandhi Indira Gandhi was expelled from Lok Sabha in 1978 by the Janata government. But then she came back to power and she withdrew that resolution, so that it's on a record that doesn't exist. But that membership, of course, was over because we had fresh elections. Then two BJP people were expelled in 25. One was Sakshi Maharaj and there was one other. They were expelled in 2005 and 2006. आज पहले ही आ गए हैं। साथियों, आपको पहले अभिषेक सिंघवी जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में मैं कुछ कहूंगा और उसके बाद आपके हम सवाल जवाब देंगे। अभिषेक सिंघवी जी। थैंक यू। So friends, as usual in Hindi and English, it'll take some time, so please be patient. I'll be doing in both languages and your colleagues should not be affected in any one language. Friends, the issue before us is political even before legal. Both facets are important, but it's a vital political issue for this country, for all political parties, for leaders of all political parties. It is a political issue because it signifies the systematic, repetitive emasculation of democratic institutions by the ruling party. It signifies the strangulation of democracy itself. We know that defamation is an exception to free speech. But over the last several years, we have had repeated examples of unthinkable assaults on freedom of speech, more importantly, on freedom after speech. After speech, you are told that you will be visited with the worst possible consequences, be it criminal, be it civil, be it incarceration, be it intimidation, be it harassment in every sphere of your life. We all know that Shri Rahul Gandhi has been speaking out fearlessly inside and outside Parliament. He has spoken on social issues, on economic issues, on political issues, without
any fear or inhibition frankly and candidly through you to India. Clearly, he is paying a price for it. Clearly, this government is rattled because he speaks with facts, figures on demonetization, be it on a supposed clean chit to China, be it on GST. He is consistently aggressive and open in his questioning. And therefore, this government is doing all these, finding new techniques of throttling his voice, of gagging him. Shri Rahul Gandhi goes abroad. He is not entitled to speak freely on grounds of fake nationalism, created imaginary nationalism, rhetorical nationalism, non-existent issues. He comes back and his speeches abroad become the basis of action against him inside Parliament. He speaks in Parliament, one of the most detailed and open speeches when the Prime Minister spoke, and he is referred to the Privileges Committee. After he came back from abroad and post the recess, when this session starts, a remarkably new ground is found, unheard of in the annals of parliamentary history. The ruling party resorts to disruption every day, saying a precondition for someone to speak in Parliament or attend Parliament is that he must first apologize. I don't think in any parliamentary democracy, Westminster or not Westminster, you have found this kind of stipulation. So disruption by the ruling party. All of this is part of a pattern. All of this is part of a pattern to stop him. A, because he speaks fearlessly and candidly. B, to divert attention from the real issues. To divert attention from the questions which my friend here asks every day. To divert attention from the burning issues before the nation today. And it is done also to send a message to create a fear psychosis amongst those who dare to question this government. Friends, that is the political part. That is what should concern our body polity. There is equally a legal part. I have shared some of that with you yesterday. Since we've had slightly more time, let me elaborate a little more today. When you hurry, when you are premeditated, when you have decided to do something, you make mistake after mistake after mistake. You multiply mistakes on a repetitive basis. Take for example, the alacrity with which you are moving. Within 24 hours, you are moving with amazing alacrity. I need to remind you that a few months ago, in a case of another political leader from Uttar Pradesh, belonging to the leading party in that state, the Supreme Court, quote unquote, when an immediate by-election was sought to be announced post disqualification of that person because of conviction, immediately, without waiting for that person to exhaust the legal remedies available, the Supreme Court in that case not only deferred the by-election, but then added, look with what alacrity have you proceeded. This is yet another example. But it gets curiouser and curiouser. As I told you yesterday, there is a provision created in law specifically called 202, which says if allegedly I commit a defamatory offence in place X, in this case Kolar, Karnataka, and if somebody chooses to sue me in Gujarat or Bihar, as in this case Surat, then the magistrate before whom a complaint is filed is mandatorily, I repeat, mandatorily obliged to conduct a preliminary inquiry as to whether he has jurisdiction to start and initiate the proceeding. He has to call for a report either himself or through the police or through agencies.
To the best of our knowledge, this point is taken by Shri Gandhi's lawyers, noted in the judgment, and not decided. Admittedly, no inquiry is conducted because there is a tearing hurry to go ahead in a place which might well be without any jurisdiction at all, namely Surat, Gujarat. As I said, it gets curiouser and curiouser. I mentioned another example yesterday. I have the dates now. Let me walk you through it. The complaint is filed approximately in April 2019. I think the exact date is April 16, 2019 at Surat. The magistrate is one Mr. Dave. On 2021, Mr. Rahul Gandhi, in 2021 year, 2 years later in June, appears in the court to record his statement in person. Shri Rahul Gandhi appears in that court. In March 22, that is 3 years after the complaint is filed, and 1 year after Shri Rahul Gandhi appeared there, the complainant files an application against someone Rahul Gandhi. When that application is rejected, possibly by a firm magistrate, obviously he had been called, he had come a second time, you cannot harass people to come again and again, he rejects it. At that point, the complainant rushes to the High Court and gets a stay of his own complaint. The High Court grants that stay on 7th of March 2022. So I file a complaint, I seek a stay of my own complaint. Perhaps days are not auspicious, the climate is not ecologically suitable. Now the same complainant, after a hiatus of 11 months, when he has no interest in his own complaint, suddenly wakes up and goes on 16th February this year, seeking a vacation of the same stay which he himself obtained. And I quote, he pleads, and you must all read between the lines. We will of course take all this in the appeal, we have legal records. Quote, he says, sufficient evidence has come on record of the trial court and the pendency of the present matter delays the trial. Pendency of what matter? His own High Court petition. He says he is delaying his own trial. So he says, please vacate. Now the sentence is, though sufficient evidence has come on record, no new evidence has come on record, actually. The High Court vacates the stay, the man rushes back to the trial court, and we get this judgment. Meanwhile, the magistrate has changed. We were not born yesterday, neither you nor me. Chit bhi apni, pat bhi apni. There are many more disturbing features about this case. There is a point which we may or may not take. I am not saying that everything Rahul Gandhi needs to take because he is fearless, he knows in his conscience, he has full reliance on the law. But there is a debatable issue. I am only flagging the issue, which I did not mention yesterday. That though the conviction is by a court, in Rahul Gandhi's case, the disqualification under Article 103 of the Constitution has to be by the President of India. And under 103, the President of India has to first, before disqualifying Shri Rahul Gandhi, take an opinion, a recommendation from the Election Commission. Admittedly, it is not done. In the interest of fairness and completeness, I must let you know also that in a case called Lok Prahari, the Supreme Court has noted the argument of the Election Commission, which says, the Election Commission says, the Supreme Court does not so hold, that we do not need to go to the President with a recommendation because this is a court conviction. The President has no role in a court conviction case. Though this point is noted by the Supreme Court in the Lok Prahari case, it is not decided. The Election Commission, no doubt, has issued circulars saying, in such cases of conviction, we don't need to go to the Honorable President. But my question is a little different. If the Constitutional Article 103 says so, neither the practice of the Election Commission, nor indeed a recordal of a submission of the Election Commission to the Supreme Court, nor indeed a recordal by the Supreme Court can change the Constitution. The highest law of the land is the Constitution.
The text of the constitutional article cannot be diluted by a practical approach saying it's a conviction by a court, therefore precedent is excluded. That is itself a questionable exercise, this immediate issuance today of a disqualification, but we let it be. We are confident that we will get a stay of conviction. A stay of conviction will remove the very basis of this disqualification. This disqualification is nothing but consequential. When the foundation goes, namely the conviction is stayed, the consequences of an illegal foundation will also go. But obviously, as the Election Commission knows, as the Government of India knows, as the BJP knows, it takes time to draft, to file. They are taking advantage of that time, hot-footing it by these disqualification notices. But we have full faith in the law and the majesty of the law, and we believe that we will emerge victorious in the near future. दोस्तों, आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं, उनके दो व्यापक आयाम हैं. एक राजनीतिक है, एक कानूनी है. लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है. पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में. पहला बिंदु उसका ये है कि जानबूझकर, बार बार, सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है. सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत. इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार. और उसके उदाहरण आप जानते हैं. बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार. श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं. उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है. और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी. कभी डिमोनेटाइजेशन ले लें, कभी चीन को क्लीन चिट का मामला ले लें, कभी जीएसटी ले लें. ये सब मुद्दे वो हैं और इनके अलावा और भी हैं जो इस सरकार को, जिनसे घिन्न है और जो उठाते हैं उनको दंडित करना उनका अनिवार्य रूल है. राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते. एक झूठे, आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है. एक अजीबोगरीब, बनाई हुई, बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं. बाहर गए, उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफी नहीं मांगे. यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सरकार पूछती है आपकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की, सत्य बोलने की, साफ बोलने की, निडरता से बोलने की. हम आपको प्रिविलेज कमेटी भेजते हैं. और सबसे अजीबोगरीब जो मैं समझता हूं, किसी गणतांत्रिक, संसदीय गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया, जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को. सरकार खुद करती है इस आधार पे कि पहले आप माफी मांगिए.
ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफी मांगिए, नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे, नहीं तो संसद चलेगी नहीं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है, जहां मुंह खोले झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए, और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए हैं। जहां तक कानूनी पक्ष है, मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं, कल बताया था मैंने, थोड़ा उसको और विस्तार से बता दूं, लेकिन संक्षिप्त रूप से, कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह, और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे, कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूं। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस वक्त एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है, अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफ़ी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूँ, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया। आप अपने आप चित भी अपनी, पट भी अपनी, अपने आप लकीरों के बीच क्या हो रहा है समझ सकते हैं, संज्ञान कर सकते हैं। मैं अंत में ये कहूँगा, श्री राहुल गांधी की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, All right, viewers. So that was a Congress press conference there, where we just heard Congress leader Abhishek Manu Singhvi once again reiterating the same thing. The issue is political, and that Rahul Gandhi is paying the voice. He's paying the price for raising his voice and speaking out fearlessly, both inside and outside the parliament. Well, that's what the Congress is saying again and again. And I just want to go straight across to our guests who are joining us live. Sujata Pandey, political analyst, and Lokesh Jindal, leader of the Congress, joining us live as well.
And I just want to go across to you first, Lokesh Jindal of the Congress. We just saw right now, and in fact, the entire PC of the Congress once again saying that it's a political issue. And Kiren Rijiju had said earlier, just a short while back when this news first broke, that Congress leader Rahul Gandhi has been disqualified, Lokesh. He said that the Congress will blame it on the BJP, even though this was a decision, this was an order which had come in from the court. First, I will talk on the disqualification issue. Yes, under the Lily Thomas case, the Supreme Court has issued its verdict claiming that if at all an incumbent member of parliament, MLA or MLC, is convicted for any offence for more than 2 years, the person stands disqualified. However, if we talk about Article 103 of the Constitution, it lays down the procedure for the disqualification. Over there, it is clearly stated that if at all there is any form of disqualification under Article 102, Clause 1, in that case, the President has to first refer it to the Election Commission, and on the advice of the Election Commission, the procedure shall be given effect to. Secondly, when I'm talking about this entire case in Surat, over here, we need to clearly understand that it was not some form of an FIR or a police complaint that this entire case was based upon. The case came under Section 202, Clause 1 of the CRPC. And the Supreme Court in the Birla Corporation Limited versus Advents Investment and Holding Limited, it has clearly laid down guidelines with respect to the procedure to be followed under 202, Clause 1. Which was not followed. On record, Rahul Gandhi had recorded his statement in October 2021, following which the complainant in March 2022 went to the Gujarat High Court, claiming that he wants a stay on the proceedings because he does not have enough evidence. And then suddenly in February 2023, the complainant goes again to the High Court, claiming that new evidences have surfaced. Now, please enlighten me. What was this sudden recurrence of evidences? I'll tell you what prompted this sudden emergence of these evidences. It was the Adani Hindenburg case. Suddenly, after the Adani Hindenburg case, new evidences come in because the center wants somehow to restrain Rahul Gandhi from exposing it. And then there was a nefarious, I would say, something that will haunt BJP in time to come, some form of, we can say, abuse of power, authority, whereby the BJP, it implemented or it exploited some of the provisions that are mentioned in the Representation of People's Act. In March 2023, the Surat court hurriedly gave the verdict, and a verdict that was politically colored. There was specifically the punishment was more than 2 years, so that they could invoke Section 8, the Section 8(3) of the Representation of People's Act and have Rahul Gandhi disqualified. Now there is is the Congress criticizing the judiciary at this point of time, because that's what it looks like? But I just want to take this question to Sujata Pandey as well, political analyst. The big question is, I just want to come across to Sujata first. Sujata, at the end of the day, he has been disqualified. He's no longer an MP, and that puts his political future in a very precarious position. Sujata? Yes, Shivangi. So I think Lokesh here and the entire Congress party, I was just hearing the press conference also, they are directly now attacking the judiciary, saying that the judge is biased, the magistrates was changed, the procedures were not followed. Well, I think this is exactly what Rahul Gandhi meant when he said that the institutions are not working. Perhaps he forgot the last line, the institutions are not working for Congress party, but rather they are working unbiased and free as they should be working
working in a democracy. First of all, Shivangi, what happens when he goes to Supreme Court, whether court gives a stay and what happens later is another question. But this disqualification is going to haunt Rahul Gandhi forever in his political career. Secondly, I just learned from a very learned lawyer that if the Supreme Court doesn't give a stay, he may not be able to even contest the 2024 elections. So, I think it's almost a game over for Rahul Gandhi, though Congress would try and say that it's a vendetta politics, etc., etc. But the fact is that that this matter was due in the court. Congress had its lawyers, they had documents to prove their case, but the verdict came otherwise because all the evidences were pointing to the fact that Rahul Gandhi, in the quest of targeting Modi, targeted an entire community. So it is definitely proven right now. I don't think there is anything much left for Congress to say than to blame the institutions now and say that the old record of that's a vendetta politics, as they were saying during the times when the ED and CBI raids were going on during the National Herald case, etc. I think it's a very, very tough time ahead for Rahul Gandhi. Well, but as a political analyst, I would definitely like to advise Rahul Gandhi that he should just show the same passion and the moral high ground in 2003 when he tore that ordinance. I think it's time that he walks the talk and says that okay, the law is applicable to all. Just because I am Gandhi or I am the Yuvraj of the ecosystem, the law will not change. The law will be applicable to everybody, and the speaker has nothing to do with it. By the time this decision came where Rahul Gandhi was convicted, he stood disqualified as an MP according to the Lily Thomas case. As simple as that. Right. Thank you so much, Sujata Pandey, political analyst, and Lokesh Jindal, leader of the Congress as well, joining us. And those visuals also coming in right now, where we are seeing that there are detained Congress leaders. They're chanting slogans against Rahul Gandhi's disqualification. Those visuals coming in right now. We're waiting for the BJP's response. The BJP will also hold a press conference, viewers, because the Congress is directly attacking the BJP for what happened, for an order which had come in, for a conviction which had come in from the law of the land. That's a constitution which the courts follow. The courts follow the constitution. The courts follow law of the land, and that order or that kind of law which is followed by the judiciary goes strictly by what it's written in the constitution. Taking a very short break right now, viewers. Much more coming up on the other side. Waiting for that BJP's response to come in. The press conference will start very shortly. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come 5-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana, and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's a second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे ये बताइए। एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? यस। अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? Climbed Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously, sir, I went to Elbrus. That was Russia, sir. That is highest mountain of Europe, sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua. That is the highest mountain of South American continent. Then I went to Carsten's Pyramid. That is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट तो मैं चढ़
चुका था. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Massif, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's the seventh continent. So the highest mountain is Vinson Massif. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing India with, how they've been operating for the last 30 years, assassinating Indian government officials, attacking military bases. कर्नल जमाल, एक बात बताइए ना, आप वहां पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए? बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना? बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया, तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, बाद में चढ़ लेंगे, सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। 2015 में when we went, earthquake happened. Then we changed our things to the rescue team, and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन. All right, viewers, going to our top story we're tracking right now here on Republic TV, where we are seeing that Rahul Gandhi has been disqualified as an MP. It's a very big news coming in. Law has caught up with Rahul Gandhi. Many reactions coming in. Let's play them out. See, the country is witnessing the politics of vendetta being spearheaded by the Modi government against Rahul Gandhi, and today he has been disqualified. It is a sheer case of retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Joro Yatra. ये कुछ अनहोनी बात नहीं है। जब उनको सजा हुई थी उसके बाद आप लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कानून जानने वालों को कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय लिया है। Viewers, much more coming up on the other side. Rahul Gandhi has been disqualified as a MP. That's a big story. Congress blaming the BJP to hold a press conference very soon. Stay tuned. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. कर्नल जमाल, एक बात बताइए ना, आप वहां पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए? बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना? बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया, तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, बाद में चढ़ लेंगे, सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। 2015 में when we went, earthquake happened. Then we changed our things to the rescue team, and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन लेके गए थे, मेडिसिन लेके गए थे, इक्विपमेंट लेके गए थे। हमने फिर वो सारी चीजें, पूरी जनता जो वहाँ पे थी, पूरे क्लाइंबर्स जो वहाँ पे थे, उनके लिए खोल दिया है। क्लाइंबिंग से ज्यादा नाम हमें जब हमने रेस्क्यू किया है उससे मिला, और वो एक शायद हमारा टाइम था जब हमने एवरेस्ट को या एवरेस्ट बेस कैंप में हमने वो वापस दिया है पहाड़ को।
There is this 26/11 incident, terror attack on Mumbai, and both nations suffered together. Do you think in that backdrop, post that, there is coming together of the two governments and the people to make sure that incidents like that do not happen again? No doubt. I think that the challenges, fears of people are pushing them to work together. राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए अंदर विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया, एक ऑटो रिक्शा वाला मिला। ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे आपस के रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इम्पोर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। क्या कांग्रेस के प्रोटेस्ट के साथ जाएंगे? अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ पुराने मतभेद, सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। कांग्रेस की प्रोटेस्ट में आप लोग रहेंगे? QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. There is this 26/11 incident, terror attack on Mumbai, and both nations suffered together. Do you think in that backdrop, post that, there is coming together of the two governments and the people to make sure that incidents like that do not happen again? No doubt. I think that the challenges, fears of people are pushing them to work together, and I think that the mutual concern of terrorism, especially when in Mumbai they also went after Jewish community, Israelis, of course in the Chabad house. So I think that our cooperation is also based a lot on counter-terrorism. We have to be much tougher.
as a nation. If a state government does not defend national interest and national security, then the center has to immediately step in. We cannot be so soft and so indecisive that a person like Amritpal and nobody first becomes a national security threat, then becomes so out of control that he organizes a private fully armed battalion around him, attacks state policemen. When the state wakes up, this man Amritpal vamooses and organizes a car chase with thousands of security forces in Punjab. Now we know that drug dealers are giving Amritpal Mercedes SUVs to drive around in. Why? Didn't the security agencies not know about all this till now, or did they allow? If a state government does not defend national interest, then the center has to step in, whether people like it or not. These are not legal matters. These are matters of national security. The United Kingdom is officially telling the people of India, the government of India, that it couldn't care less. The United Kingdom is telling the government of India that it wants to do business with India, but it will do nothing to defend India. Good afternoon, it's 4:30. I'm Samiksha Srivastava. We are tracking the big story this afternoon coming in of Rahul Gandhi having been disqualified as the Lok Sabha MP. Now, a lot of political reactions that have been coming in with the TMC and the Aam Aadmi Party now coming out in support of Rahul Gandhi. Starting first with the top headlines this hour. Rahul Gandhi disqualified as Lok Sabha MP after being convicted in defamation case. This government is clearly relying, if it is in parliament, one set of techniques to throttle voices. If it is outside parliament, a second set of tactics which in recent times has had an effect inside parliament. So you say something outside parliament and we won't allow parliament to run. Congress says Rahul paying price for speaking up. Key meet at 5 p.m. over Rahul's disqualification as MP. जो पूर्व में निर्णय दिया गया है तो उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है। उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की घोषणा की है। BJP hits back at Congress, says it's not criticism but clear abuse, slams Congress for questioning judiciary. और 2009 में ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। From stubbing the EVM bogey to slamming anti-India rant, Chief Minister Yogi Adityanath launches an unrelenting attack on the opposition. Slapgate hits Vadra Congress in poll-bound Karnataka. Has Siddaramaiah learnt no lessons is the question. After UK goes slow on Khalistanis, India sends out a stern message again. Delhi cops register case over MHA directions. Now, Rahul Gandhi has been disqualified as Lok Sabha MP. This, of course, after the Surat court on Thursday found him guilty for the remarks that Rahul Gandhi made way back in 2019, just ahead of the Lok Sabha elections in the Kolar constituency. Now, the Congress party has come out in support of Rahul Gandhi, saying that he's done no wrong and that all of this is a witch hunt against the Grand Old Party. Meanwhile, several other opposition parties, including the likes
of the TMC and even the Aam Aadmi Party have come out in support of Vadra Congress, calling it all a witch hunt against the opposition parties. A lot of opposition reactions that have been coming in since the time this news came of Rahul Gandhi having been disqualified as Lok Sabha MP. Listen in. राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। जो पूर्व में निर्णय दिया गया है तो उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की घोषणा की है। So there you heard a lot of reactions that have been coming in since the time the news came of Rahul Gandhi having been disqualified as a Lok Sabha MP. Meanwhile, we're given to understand a key meet would be chaired by the Congress top brass in just a while from now. 5 p.m. is the time when the Congress would be holding a big meet. In fact, just a short while back, Rahul Gandhi was met by his mother Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra at his residence. In fact, listen into what Adhiranjan Chaudhary and other leaders had to say on Rahul Gandhi having been disqualified as the MP. See, the country is witnessing the politics of vendetta being spearheaded by the Modi government against Rahul Gandhi. And today he has been disqualified. It is a sheer case of retributive politics because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Joro Yatra. ये कुछ अनहोनी बात नहीं है। जब उनको सजा हुई थी उसके बाद आप लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कानून जानने वालों को कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में सुना जाता था। I think this action by the parliament has been, action by the government has been very vindictive, and it is extremely shameful and sad day for Indian democracy, parliamentary democracy, that we've had times where we can have a conversation across the board. When Bharatiya Janata Party had 2 members of parliament, they had all the respect as the leaders of opposition. But today we are seeing an concentrated effort to silence the voice of the opposition. Because Mr. Gandhi has been vocal about various issues, we see this kind of action being taken against him. On what just happened to Mr. Rahul Gandhi, the BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows. But this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. Now, despite these castist remarks that were made by Rahul Gandhi way back in 2019, despite the fact that the Surat court has found Rahul Gandhi guilty for the remarks that he made way back in 2019, several of the opposition leaders from the parties, including the Aam Aadmi Party, the TMC, and even the Shiv Sena have come out in support of Rahul Gandhi, calling all of it a witch hunt against the Grand Old Party. Listen into what Arvind Kejriwal had to say just a short while back. सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है एक तानाशाह से,
एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। Absolutely bizarre and shocking statements that have come in from Arvind Kejriwal, where he says that this is not a fight that's limited to Rahul Gandhi or the party in specific, but this is a fight to save the nation from an illiterate and an egoistic person. So these are the remarks that have come in from the Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal, who's not just backed the grand old party and Rahul Gandhi. He's gone on to say that this is not a fight limited to one party, but this is a fight to save the nation from an illiterate and an egoistic person. So Kejriwal there going all out, attacking Prime Minister yet again, insulting the Prime Minister, saying that this is the fight not just limited to the grand old party, but a fight to save the nation, even going on to use the word for the Prime Minister, calling him less educated. So, of course, while the court has found Rahul Gandhi guilty for the remarks that he made in 2019, the casteist remarks that were made by Rahul Gandhi way back in 2019, several of these parties have now come out in support of Rahul Gandhi, calling it all a witch hunt against Rahul Gandhi. Listen in once again to these remarks that were made by Arvind Kejriwal. कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। From Arvind Kejriwal, where he's insulted the Prime Minister, calling him less educated. Let's take a word from Charu Pragya, also joining us. Charu Pragya, how do you read into this? Absolutely ridiculous. It is like stooping to the lowest level. Kejriwal calling Prime Minister less educated. Good evening. And yes, you're right. It is so rich coming from a person like Mr. Kejriwal, because he runs a government where the portfolios of this government, 70% of them were with two ministers who are behind bars today. Behind bars on very serious charges of misappropriation, of corruption, of making sure that the rights and the money that should be used for the people of Delhi is being used by Mr. Kejriwal, his two ministers, and his list of cronies. It's a bit rich coming from him, and frankly, I don't even think he deserves much of a reply, because all we need to do is look at any RTI report about anything that Kejriwal boasts about today. When he talks about school,
We know the truth of that because RTI reports have told us that kids in Delhi can barely even study science because 60% of the schools don't even offer science. Nearly half the schools don't even have a principal. So his citadel is falling every single day as he and his ministers continue to get exposed. And any statement that he makes against Prime Minister Modi, I would just like to quote Modi ji himself. आप जितना हमारे ऊपर कीचड़ फेंकोगे, उतना ही कमल खिलेगा और उतनी ही भारतीय जनता पार्टी की रीच प्रभाव से बढ़ता जाएगा. Well, that's right. And what do you make of these several parties coming out in support of Rahul Gandhi? They're calling it all a witch hunt. This, of course, after Surat court found Rahul Gandhi guilty for the 2019 remarks he made. So they have to band together, that is obvious. But when it comes to issues of importance, do they actually band together? When it comes to issues of the opposition coming together to even attempt to form a government, are they actually together? Did they walk with Rahul Gandhi for his so-called Bharat Jodo Yatra? Not at all. So this is just a section of people in politics who are against Prime Minister Modi, just speaking up because it is convenient to them. Nobody is with Rahul Gandhi today, as nobody is with Mr. Kejriwal today. All right, Charu Pragya, thank you for speaking to us. So absolutely baffling remarks that have come in from Arvind Kejriwal, where he's insulted the Prime Minister, calling him less educated. In fact, several of these parties, including the likes of Shiv Sena, the Aam Aadmi Party and the JDU also coming out in support of the Congress and calling it all a witch hunt and a political vendetta that is happening against Rahul Gandhi. This, of course, let's not forget, after Surat court found Rahul Gandhi guilty for the remarks that he made in 2019. We slip into a very short break for now, but we'll continue to get you more reactions on the other side of this very short break. And also, it's a standby for the BJP press briefing very shortly. The opinion about Israel within the Indian population is much more favorable vis-a-vis how Israel is seen, for example, even in the United States. There is a known phenomena here that Israelis after military service, they choose to come to India, what I call a full immersion visit. So they don't come five-star hotels. They go backpackers, they want to live, they go to Vipassana, and they want to be part, I think, and parcel of the culture, to live like Indians. 30, 40 years, Israelis have been doing it. Now it's the second generation. I see the parents here coming and bringing their teenager children to show them their experience from India when they were after military service. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे बताइए। एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? यस। अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? Climbed sir Kilimanjaro, that is Africa's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent sir. Then I went to Carsten's Pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट में चढ़ी चुका था sir. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Massif, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's the 7th continent. So the highest mountain is Vinson Massif. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing in India with, how they've been operating for the last 30 years, assassinating Indian government officials, attacking military bases. And a quick look at news in brief from across the country. 14 opposition parties led by the Grand Old Party approached the top court alleging misuse of central agencies against political opponents. Top court has now agreed to hear the matter on 5th of April.
Amid massive ruckus and sloganeering by the opposition, Lok Sabha was adjourned for the day. The House will now resume on 27th of March. Before the adjournment, Finance Bill was passed in the Lok Sabha despite the opposition creating ruckus in the parliament. Shri Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Chairman sir, with your permission, Society's Amendment Bill 2022 as reported by Joint Committee. Thank you. And not just the Punjab police has confirmed the private army of Amritpal, but has also given out details of Amritpal Singh and his aides in this operation. And the press conference that was addressed, the police informed that several weapons were recovered apart from other incriminating material. The private army of Amritpal Singh, AKF, was being given weapon training and the members were brainwashed by Amritpal Singh as well. 10 bulletproof jackets were delivered in just 10 months' time in the training period. And we slip into a very short break, but it's a standby for the BJP briefing in just a short while. एक बात बताइए ना, इतने माउंटेन्स आपने चढ़े, इतने कॉन्टिनेंट्स पे इंक्लूडिंग एवरेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था ये बताइए? सर, आई वुड से एवरेस्ट इज ऑलवेज द डिफिकल्ट वन. हालांकि लॉट ऑफ पीपल सेज एवरेस्ट में आजकल हर कोई चढ़ रहा है, बट लेट मी टेल यू सर, एवरेस्ट रिमेन्स एवरेस्ट. एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड इट विल रिमेन सो. एंड आई हैव फाइंड एवरेस्ट टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट. अल्टीमेटली क्रेवासेस उस खुम्बू ग्लेशियर में आपको क्रॉस करने हैं. अल्टीमेटली लोत्से फेस में जो 70 डिग्री की वॉल है वो आपको चढ़नी है. डर लगा कभी? सर, आई थिंक डरना भी जरूरी है सर, बिकॉज डर जब आपको लगता है आप सतर्क रहते हैं. आपने कर्नल जमाल कौन कौन से माउंटेन्स क्लाइम करे ये बताइए. एवरेस्ट आप 3 बार चढ़ चुके हैं? यस. अब आप मुझे कॉन्टिनेंट वाइज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट पीक थी जो आपने चढ़ी? क्लाइम सर किलिमंजारो, दैट इज अफ्रीका's highest mountain. That was my first mountain. Then obviously sir I went to Elbrus, that was Russia sir. That is highest mountain of Europe sir. That is Mount Elbrus. So then I went to Aconcagua, that is the highest mountain of South American continent. Then I went to Carsten's Pyramid, that is Australasian continental shelf. So we went and climbed that. It is supposed to be the Australian highest mountain. And उसके पहले एवरेस्ट तो मैं चढ़ ही चुका था सर. Then I went and climbed the highest mountain of North American continent, that is Alaska. That name is Mount Denali. So then last was Vinson Massif, that was in Antarctica. Antarctica's highest mountain, because it's the 7th continent. So the highest mountain is Vinson Massif. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing India with, you know, how they've been operating for the last 30 years, assassinating Indian government officials, attacking military bases. कर्नल जमाल एक बात बताइए ना, आप वहां पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए? बिल्कुल सर. आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना? बिल्कुल सर. लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया. आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, बाद में चढ़ लेंगे. सबसे पहले लोगों की जान बचाओ. 2015 में when we went, earthquake happened. Then we changed our things to the rescue team and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन लेके गए थे, मेडिसिन लेके गए थे, इक्विपमेंट लेके गए थे. हमने फिर वो सारी चीजें पूरी जनता जो वहाँ पे थी, पूरे क्लाइंबर्स जो वहाँ पे थे, उनके लिए खोल दिया है. क्लाइंबिंग से ज्यादा नाम हमें जब हमने रेस्क्यू किया है उससे मिला, और वो एक शायद हमारा टाइम था जब हमने एवरेस्ट को या एवरेस्ट बेस कैंप में हमने वो वापस दिया है पहाड़ को.
The Home Minister has arrived at B.S. Yediyurappa's residence, Kaveri in Bengaluru, and he was supposed to meet both B.S. Yediyurappa as well as his son B.Y. Vijayendra, who were also present along with Chief Minister Baswaraj Bommai as well. And largely now it is being stated that this is a meeting to go on and discuss poll strategy for the BJP ahead of the upcoming elections as well, because Vijayendra has been tasked with heralding the Vijay Sankalpa Yatra across all the constituency, and he is in close talks with the central leaders as well, because we saw Vijayendra largely present with JP Nadda as well, and he was instrumental in launching the booth program for the BJP in the state of Karnataka along with the Chief Minister as well. And now Vijayendra's growing stature as a BJP leader is now being clearly seen over here, because when the Union Home Minister Amit Shah immediately arrived, he also spoke to Yediyurappa, but in a very lighter tone, stating that let Vijayendra give him the bouquet first. And this clearly goes on, and if you're reading between the lines, shows Vijayendra's stature as an important leader within the Karnataka BJP, no matter who the detractors are, even within the BJP party itself. Armed struggle is the only way. Investing in armed struggle and destabilizing India with, how they've been operating for the last 30 years, assassinating Indian government officials, attacking military bases. कर्नल जमाल एक बात बताइए ना, आप वहां पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना। बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया, तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, बाद में चढ़ लेंगे। सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। 2015 में when we went, earthquake happened. Then we changed our things to the rescue team, and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन लेके गए थे, मेडिसिन लेके गए थे, इक्विपमेंट लेके गए थे। हमने फिर वो सारी चीजें, पूरी जनता जो वहाँ पे थी, पूरे क्लाइंबर्स जो वहाँ पे थे, उनके लिए खोल दिया है। क्लाइंबिंग से ज्यादा नाम हमें जब हमने रेस्क्यू किया है उससे मिला, और वो एक शायद हमारा टाइम था जब हमने एवरेस्ट को या एवरेस्ट बेस कैंप में हमने वो वापस दिया है पहाड़ को। There is this 26/11 incident, terror attack on Mumbai, and both nations suffered together. You think in that backdrop, post that, there is coming together of the two governments and the people? Hello and a very warm welcome. You're watching the news here. Let's get you the top stories at this hour. Rahul Gandhi being disqualified as Lok Sabha MP. Defamation case. Congress says Rahul Gandhi is paying the price for speaking up. BJP hits back at the Congress party, says it's not criticism but clear abuse. Slams party for questioning the judiciary. कर्नल जमाल एक बात बताइए ना, आप वहां पे गए थे एवरेस्ट चढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। आपका मिशन था एवरेस्ट चढ़ना। बिल्कुल सर। लेकिन बीच में अर्थक्वेक आ गया, तो आप लोगों ने अपना मिशन चेंज कर दिया। आपने बोला कि एवरेस्ट तो ठीक है, बाद में चढ़ लेंगे। सबसे पहले लोगों की जान बचाओ। 2015 में when we went, earthquake happened. Then we changed our things to the rescue team, and we were there in Everest base camp for around 15 days. हम लोग 45 दिन का हम लोग पूरा सामान लाए थे, राशन लेके गए थे, मेडिसिन लेके गए थे, इक्विपमेंट लेके गए थे। हमने फिर वो सारी चीजें, पूरी जनता जो वहाँ पे थी, पूरे क्लाइंबर्स जो वहाँ पे थे, उनके लिए खोल दिया है।
क्लाइंबिंग से ज्यादा नाम हमें जब हमने रेस्क्यू किया है उससे मिला, और वो एक शायद हमारा टाइम था जब हमने एवरेस्ट को या एवरेस्ट बेस कैंप में हमने वो वापस दिया है पहाड़ को। There is this 26/11 incident, terror attack on Mumbai, and both nations suffered together. Do you think in that backdrop, post की नींव को मजबूत किया, कल प्रमाणित किया भारत की कानून व्यवस्था, भारत की प्रजातांत्रिक पद्धति में कोई ऊपर नहीं है। कल कांग्रेस पार्टी के एमपी श्री राहुल गांधी जी की ऊपर एक डिफेमेशन केस के अंदर, डिफेमेशन केस इसीलिए हुआ था, एक सार्वजनिक सभा में देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना, इसी आरोप पे जब कोई पिछड़े वर्ग की भाई की मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया, भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस शायद 2018 से अभी तक चल ही रहा था, पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी के सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था, जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी, विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को, भारत की एक महत्वपूर्ण, भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को
गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। कि भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य रहे, सदस्य हैं। और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ, दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था। 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जाने, वो अपना कानून जाने, अपना वकीलों को परामर्श करे, जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है, भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रजातंत्र की इस इंस्टीट्यूशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे,
ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? मित्रों, इसको भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर शब्द में निंदा करती है। बाकी कुछ विषय मेरे मित्र आप उसमें जोड़ेंगे। नमस्कार मित्रों,